Hello guys, good evening and welcome to this class of Economy Foundation. I hope you can all see and hear me. Very good evening to all of you. If you can see and hear me, please write yes in the chat. Today's class will start with something special. So if you can see and hear me, please write yes. Okay. So as many of you might be aware, today was the essay paper of means 2025. आज ही था essay का paper. So what we'll do is, before we start the class, we will first look at a little bit of the essay paper. एक बार हम पहले essay paper देखते हैं कि essay paper आज कैसा आया and what is the essay paper like and what is the experience. I know many of you must be very new here. आप में से कई लोग यहाँ पर बहुत नए हैं जिन्होंने just अभी अपनी preparation start की है. So you might not be aware of what the essay paper is like. But I want कि all of you, कई लोग ऐसे भी होंगे जो जनवरी से इस बैच में हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो अभी जुलाई में ही इस बैच में आए हैं, right? But I want that all of you take a look at what the essay paper looks like. essay paper दिखता कैसा, इस बारे में एक बार let's take a look. So before I discuss the paper with you, see, this is how the mains is conducted. आज फ्राइडे है. फ्राइडे को 9 to 12 there is the essay paper. Then there is Saturday, there is Sunday. Saturday को again 9 to 12 इसी first slot में there is GS1 and second slot में there is GS2 and इस slot में there is GS3 and इस slot में there is GS4. ये 4 slot हैं जिसमें ये पेपर होता है. तो now just imagine yourself on Thursday कि आप Thursday को you know that this it's not right to call it massacre, but something like that. This huge mountain to climb is there in front of you in the next 3 days. So Thursday ko generally the advice that I give to students who are appearing in mains is that Thursday ko write a couple of essays, just practice an essay. Essay generally requires you to write 1200 words per topic. I'll share a little bit of my own experience with you. तो जब आप essay में जाते हो, when you go to the essay and जब आप पेपर देने जाते हो, the most important topic or the most important thing to do in the essay paper is topic selection. If you select the topic properly, you will get good marks, because you should select a topic that you are comfortable in writing that topic. और आपको एक essay में there are 2 essays that you have to write. One essay has to be 1200 words. तो 1200 वर्ड का एक essay आपने लिखना है. 1200 words is what you need. Tomorrow on YouTube I will analyze the entire paper with you. कल मैं अपने YouTube पे एक वीडियो डालूंगा where I'll be analyzing the entire paper. पूरा पेपर मैं एनालाइज करूंगा और बताऊंगा कि मैं कौन सा सिलेक्ट करता वगैरह. बट आई वांट कि आप लोग एक बार यू टेक अ लुक एट दिस. तो जब आप पेपर में जाते हो ऐसे वाले दिन, ऑफ कोर्स यू आर फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंजाइटी, स्पेशली जब आप अपना फर्स्ट मेंस देने जाते हो. आई गिव माय फर्स्ट मेंस इन 2021, कुड नॉट क्लियर दैट मेंस. देन इन द नेक्स्ट मेंस इन 2022 आई गॉट सिलेक्टेड. तो 2021 मेंस में मुझे बहुत एंजाइटी थी कि मैं कौन सा ऐसे पिक करूंगा. So again, when you go to the exam hall, there is a lot of anxiety on that day. तो आप पेपर देखते हो और आपके सामने ये 8 essays होते हैं, सेक्शन A के 4 और सेक्शन B के 4, and you have to pick one and then write 1200 words on it. So generally when you are writing the essay, what is the format? The format is कि आप you spend the first 10 minutes, you have a topic selection.
you have a topic selection in the first 10 minutes. ठीक है? Once you've done that, then the idea is to brainstorm. Generally, your brainstorming takes about 20 minutes. Then you start writing the essay. Writing generally takes about 50 minutes to 1 hour. एंड जिस ऑर्डर में ये चीजें लिखी हैं उसी ऑर्डर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देन दिस मैटर्स. अल्टीमेटली ये तो बस दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज ऑफ यू putting to paper what you have brainstormed. So this is what happens, right? Then you repeat the same exercise. So you'll spend about 1 hour 20 minutes here. You repeat the same exercise. You'll spend 1 hour 20 minutes on section B. एक सेक्शन ए का ऐसे लिखना है, एक सेक्शन बी का ऐसे लिखना है. सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट ट्वाइस. तो अब ये आपके सामने सेक्शन ए का पेपर है. ठीक है. आई वांट दैट ऑब्वियसली यू गाइज आर टू यू आर लिटिल बिट न्यू टू द प्रिपरेशन. आप में से कई लोग जो जनवरी से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने काफी मेंस का भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया होगा, बट कई लोग आप में से बहुत रिसेंट होंगे जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी. टेक 3 minutes and try just look at these topics because देखो ये एक्सरसाइज आपके साथ कोई करेगा नहीं, राइट? एंड आई एम हियर टू डू दिस एक्सरसाइज विद यू ताकि आपको थोड़ा एक फ्लेवर मिले कि हाँ यार किस टाइप से वी हैव टू लुक एट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए. सो आई गिव यू 3 minutes एंड मैं आपको कोई हिंट नहीं देता. सिलेक्ट द टॉपिक फर्स्ट. 3 मिनट हैं. अगर आपको मैं बोलूं इस पे आपने ऐसे लिखना है, आई नो आपको अभी बहुत कम इंफॉर्मेशन है. अ लॉट ऑफ यू might have only read economics with me, read nothing else. Some of you might have read all the foundation subjects, polity, geography, modern history and economics भी आप में से कई लोग जितना मैं पढ़ा चुका हूं उतना पढ़ चुके होंगे. But still I want you to take a look at this and understand what what would be your topic that you would select, and then I'll tell you how that selection is done और मैं कौन सा सिलेक्ट करता. आपको मैंने कई बार आप लोगों के साथ मैंने जब ओरिएंटेशन सेशंस लिए हैं, आई हैव गिवन यू वन होमवर्क एवरी सिंगल टाइम. आप सब लोगों को जब आपका बैच स्टार्ट हुआ होगा मैंने आपको एक होमवर्क दिया होगा, एंड दैट होमवर्क वुड हैव बीन कि यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन है मेंस वाली, मेंस का जो सिलेबस है दैट यू हैव टू रीड. ये होमवर्क मैंने आपको जरूर दिया होगा. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट होमवर्क, I am sure that most of you would not have read what UPSC has written in its syllabus for essay. essay का भी UPSC का एक सिलेबस है. उन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, उन्होंने एग्जैक्टली बोला है कि दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम अ गुड essay. अगर वो चीज पता है you will be able to write a very good essay, otherwise you might not be able to select the right topic. तो देखते हैं आप लोग क्या सिलेक्ट करते हैं. You have 1 minute remaining. Please select your essay topic. चलिए
बताइए गाइस, क्या सिलेक्शन? व्हाट वाज, विच टॉपिक वुड यू सिलेक्ट? जस्ट यू कैन टेल मी 1 2 3 4. आप 1 2 3 4 लिख सकते हो. The most common one I see is 4, but ठीक है, all right, all right. Now let me explain something to you. What is the criteria of this selection? ये सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है, किस बेसिस पे ये सिलेक्शन करने की आवश्यकता है? The only criteria is you need to understand what the topic means fully. Because in UPSC's notification of essay, जब UPSC की notification आती है essay की, UPSC says only one thing, or it says a multitude of things, but the most important thing that it says is that I want clear and concise expression, sticking to the topic. I want relevant essays. So the mantra here is relevant, clear and concise. All of these, actually concise को अगर हम हटा भी दें, all of these you can be relevant and your expression can be clear only when you understand the topic fully, you understand the meaning fully, right? तो अब एक काम करते हैं. Now let me explain to you broadly what is the meaning of each of these words. I know we are deviating slightly from economics. शायद मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूं क्योंकि हम ये एक्सरसाइज आज कर रहे हैं. I hope you guys will be okay with it, right? मैं शायद एक एक्स्ट्रा क्लास लूं because we are doing this exercise today, but I think ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. This is real life experience और आज ही पेपर हुआ है, तो I'm sure you guys are also excited to look at it. तो देखो, फर्स्ट टॉपिक, ट्रूथ नोज नो कलर. इस टॉपिक का मतलब क्या है? This means that truth, whatever is the ultimate truth, does not have any differentiation on the basis of any identifying factor. Color here is an identifying factor. Let's say your truth is knowledge. The truth that you are seeking is knowledge. Then it does not care if someone is of some particular race, particular gender, particular age, particular sex. It does not care. Truth will remain the truth. You can try to paint it in any brush. You can try to, manipulate it, try to change it. It does not change. It knows only one identity, which is the truth. इसके आसपास जो भी चीजें हैं, that doesn't matter. Basically, you can't bend the truth. And सच्चाई जो है, truth जो है, जो real meaning है, it does not matter where it is coming from, right? लोगों के गुण देखिए, लोगों की actual qualities देखिए. Don't look at their, look at their outward characteristics, right? It is a quote by Adolf Hitler. Actually, it's not a very nice person to quote, but he said once that victor will never be asked, the victor, the person who wins, will never be asked if he told the truth. This quote is in opposition to that. What Hitler said was, whoever wins, the victor will never be asked what is the truth. Whoever wins tells the truth. For example, it was Britain who won in the Second World War, the Americans who won in the Second World War. They shaped the truth. They shaped the world in which we live. They shaped our perceptions. This quote is in opposition to this quote. It is said in opposition to this that no, truth is not shaped by any one person. It knows no color. It is universal. That truth is universal. This says that truth is relative. थोड़ी सी हो सकता है हाई लेवल की बात हो, बट समझने की कोशिश करना, right? Hitler was saying, and just because Hitler was saying doesn't mean this is a wrong conception. You can think like this also, that सच्चाई क्या है या truth क्या है, that is shaped by whoever is in power. This is also, जिन लोगों ने ऑप्शनल में पढ़ा होगा, this is also the theory of postmodernism. कि जो भी हमारे dominant ideas of truth हैं, जो हम सोचते हैं कि यार ये चीज सही है,
this is the correct thing, this is what our norms are supposed to be like, it is controlled by those who are in power. And this thing is saying कि नहीं, ऐसा नहीं है, it is universal. दुनिया में जो भी ट्रूथ है वो वैसा ही है जैसे हर जगह होना चाहिए. So for example, there is a conception of human rights. तो एक ट्रूथ है कि ह्यूमन राइट्स शुड बी यूनिवर्सल. ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल हैं एंड दे शुड बी इन एवरी कल्चर. हर कल्चर में, चाहे कैसा भी कल्चर हो, कोई भी कंट्री हो, कुछ बेसिक सेट ऑफ राइट्स होने चाहिए. इसका एक अपोजिंग व्यू है कल्चरल रिलेटिविज्म. एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा, कल्चरल रिलेटिविज्म सेज दैट योर ideas of what are human rights or what is right or what is wrong is driven from your culture. Something that is right in India might not be right in, let's say, Kenya. For example, there are tribes in Africa जो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं by spitting on each other's face. वहां पर वो चीज समझी जाती है that it is a mark of respect. यहां पर अगर वो काम किया जाए तो यहां पर वो कंसिडर किया जाएगा कि काफी डिसरिस्पेक्टफुल है. So this is the idea, and just because यहाँ truth knows no color लिखा है, it does not mean that you have to only give this expression. आप इसके उल्टा साइड भी लेके इस बारे में लिख सकते हो. Now this is the meaning of the first topic. Let me come to the second topic. The second topic is a relatively easy one. The art of war is to subdue the enemy without fighting. This is a direct quote from a book written by a Chinese general called Sun Tzu. The name of the book is Art of War. Art of War के काफी quotes हैं जो याद करने लायक हैं. This is one of those. It's a very very famous quote from Art of War that you actually, इसका मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है. You can subdue the enemy. You can. It's not defeat. It is subdue. Every word matters. Subdue. Subdue means you can contain the enemy. You can bog the enemy down without fighting him. जैसे अगर मोस्ट लोगों ने शायद यहां पर इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल सोचा होगा. सो इन दिस एग्जांपल यू कैन थिंक ऑफ इंडिया फाइटिंग विद पाकिस्तान और इंडिया यूजिंग इट्स डिप्लोमैटिक रीच टू लेट्स से गेट पाकिस्तान लिस्टेड इन द FATF ब्लैक लिस्ट, टू गेट पाकिस्तान डिप्लोमैटिकली आइसोलेटेड. तो कह रहे हैं कि नहीं, जो सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर है, जो बेस्ट आर्ट ऑफ वॉर है, वो है व्हेन यू सबड्यू द एनिमी. When you subdue the enemy without fighting, आप उनसे लड़ते नहीं हो. You don't fight with them. You just subdue them through whatever you can do around them. आप उनसे लड़े बिना ही उनको नीचे कर देते हो. This is the idea. Relatively easy topic to write. As compared to this, a lot of you might understand the meaning of this, and this might be relatively easier to write. इसकी भी philosophy पे आऊंगा अभी. Third. Thought finds a world and creates one also. Right? Whatever your thoughts are, this is probably the most tough topic in the four of them. At least for me. For me, I would say कि ये topic कह रहा है that your thought, a new idea can create a new world. A new idea, if it is good, it will find its relevant world. मेरे हिसाब से this is a relatively tough topic. And if you ask me, I would have chosen topic number 4. Because it is, in my opinion, the easiest topic to write, the easiest topic to understand, and the examples that you will give will be very close to the demand of this question, which is best lessons are learned through bitter experiences. जैसे ही मैंने ये पेपर देखा था आज सुबह, I saw this paper, then we were discussing this also. I thought I will write on this, and ये देखते ही I was able to think कि अच्छा यार, if you look at India, ये चीज इंडिया के लिए कितनी relevant है. India had a food shortage. We went for Green Revolution. India had something of a balance of payments crisis, ये तो हम पढ़ेंगे ही. We went for 1991 LPG reforms. India had a democratic crisis, which was the emergency. We went for 44th Constitutional Amendment Act. India had a health crisis. But India learned the lesson and had then
our own vaccines after COVID. तो मुझे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इतने एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, आई कैन आल्सो गिव दिस एग्जांपल थ्रू माय सेल्फ. I will not write this in the essay, but I'm just telling you, I had a bitter experience in mains 2021 when I failed. I learned the lesson and next year I succeeded. Right. I'll tell you my marks in the essay. Essay में आजकल marks, at least from the last 4-5 years, marks have been relatively low. In 2021, I got 111. In 2022, I got 122, which was a decently good score that year. ठीक है. So these are the 4 first essays. अब समझो, when you are identifying the topic, there is no need to be unique. There is no need to be, going out of the box. कि देखो बाकी लोग तो ये लिख रहे हैं, मैं ये लिख के दिखाऊंगा. कूल बनने की जरूरत नहीं है. Criteria is only one. Only one criteria is there, which is understand the meaning. Wherever you can understand the meaning well, you should pick that essay. So now we'll do the same exercise for section B. And now I want you to take another 3 minutes. I will be absolutely quiet and you pick which topic you will write here. But now use the criteria that I have told you. All right. बताओ जी, selection. Tell me which topic did you select?
अरे ये 5 और 8 का कुछ कहानी नहीं है यार, पिक वन, जस्ट वन, पिक वन, नॉट मल्टीपल. Okay, okay, fair enough, fair enough. 7 and 8 are the most common ones. ठीक है. Let me now explain. Let me now explain the meaning to you in all of these essays. The first one is muddy water is best cleared by leaving it alone. Muddy water is like internal dirt or some issue is there. When there is some issue, it is best to leave it alone and clear it. Basically, don't need to take any active intervention to that issue. Now, this might be applicable to human relationships and issues of your mind and your own friendships, your ideas of thinking. Let's say if there is a conflict that is happening in your head, it is best to give it time. You will find the answer to the conflict. If there is some conflict in your relationship, give it time, leave it alone, and time is the best healer of that. But this is not applicable when it comes to the nation. Let's say there is some issue, the muddy water is, let's say, the lack of development, the muddy water is, let's say, poverty, then it is not best to leave it alone. Their active intervention is required, right? Here the most important thing is to understand the meaning of muddy water. Muddy water represents an issue which, if left alone, will settle by itself, but if you intervene, it will become even more muddy. So calling it poverty or taking the example of poverty is wrong here. What is muddy water? Muddy water here is some issue that you don't have to intervene. It will sort itself out. But agar aap usme intervene karoge, if you will go and intervene in that issue, that's what happens with muddy water. If you try to, with your finger or with some spoon or something, you try to solve the issue or you try to separate the mud, it will get even more muddy. So muddy water is like that, either like that internal conflict. It is like that internal conflict, or it is like some issue that you have in your head, some strained relationship that can only be cleared, that can only be ensured that this issue is solved if you do not intervene in it directly. If you intervene in it directly, it will be a problem. If you intervene in it directly, it will become a problem. That is what this topic is saying. Second, years teach much which the days never know. Fairly simple topic. This topic is all about the relevance of experience. That there is experience which can teach you a lot. Years of doing something can teach you stuff which days will never know. With short amount of time, with just a little bit of time spent not having experience, you will never know, right? This is an easy topic to write. I might have selected this topic because there is no shortage of examples in this topic. Again, there is no reason to be unique. There is no need to be unique, no need to be cool, no need to separate yourself from the crowd. The idea here is to select the topic where you understand the meaning very well. And in this topic, you can understand the meaning very, very well. Very well, you can understand the meaning in this topic. It is best to see life as a journey, not as a destination. I think all of us understand the meaning of this. Meaning here is fairly clear. Meaning is that grand plans of success. Grand plans of success. And this I can tell you for my real example. अगर आपको लगता है कि अभी आप दुखी हो एंड जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे तब देखो आप कितना बढ़िया फील करोगे, ऐसा नहीं होता. 5 मिनट की खुशी है रिजल्ट की, 5 मिनट नहीं होंगे तो 5 घंटे, नहीं तो 5 दिन. 5 दिन बाद it will start feeling normal. The happiness that comes, it comes through what we do in our everyday lives. It does not come through these grand plans कि ये grand plan मैं fulfill कर लूंगा फिर मैं खुश हो जाऊंगा. ऐसा नहीं होता है लाइफ में. I have been selected. I have been not very happy in life. I've been very happy in life, and I've seen this happen
myself. Very easy topic to understand. You can write various examples here, not only personal examples, you can also write in terms of, let's say, the country, the international community. There are various ways to write this essay as well. And the last one, contentment is natural wealth. Luxury is artificial poverty. So if you keep chasing luxury, what is the definition of poverty? This essay I want कि आप थोड़ा relate करो from what I have taught you. What is the definition of poverty? Definition of poverty. What is the one word that comes to your mind when I say poverty? One word. Just give me one word. Okay. Deprivation. Very good. Very good. Very good. Deprivation. One word is deprivation. If I was writing, I would definitely pick this. Poverty is deprivation. If poverty is deprivation, that means if I have luxury, I have lots of, expensive things. I have lots of expensive things. But there is no limit to it. If I'm buying a car that is worth, let's say, very expensive car worth 50 lakh rupees, there is a car that's available for 1 crore. There is a car that's available for 2 crore, a car that's available for 3 crores. There is no limit to it. So if I look at luxury as my source of happiness or as my source of contentment, then there is no limit. And even if I am here, even if in this ladder, let's say I am here, I will always be able to see कि देखो इससे एक और महंगी चीज तो है ही, तो I will always feel deprived and I will feel that I am living in poverty. This poverty is artificially made. It's not real. I have created this poverty because of my tendency to chase luxury. It is my tendency to chase luxury, and because of that, I have created this poverty. So luxury is artificial poverty, but contentment is natural wealth. Contentment is natural wealth. Contentment is being satisfied with what you have. If you are satisfied with what you have, if you are content with what you have, you will not chase anything. Naturally, you will feel wealthy. Wealth is worth, right? We've studied wealth is net worth. If you are content, if you are satisfied with what you have, you will automatically feel that you are fairly wealthy. You have a lot of net worth, because even if now, in the same example, I am traveling by cab every day, I don't own a car. Or let's say I have a bike, I don't own a car. Even then, if I am content with my life, if I am satisfied, if I am happy about the sort of person I am, the morals that I have, the ethics that I have, the ideas that I have in my head, the way I treat the people around me, the kindness that I have, the compassion that I have, not the money that I have, but the person that I am, right? If this is the story, then I am naturally wealthy. I remember this very good quote that the most annoying thing about the rat race is that even if you win the rat race, you are still a rat, right? आप अगर जीत भी गए, even then you are still a rat. And luxury or any of this, idea of money, this is usually to show someone else. Show this to someone else कि देखो मेरे पास ये है. बट किसको दिखाना है? क्यों दिखाना है? अल्टीमेटली तो आपको खुद को ही देखना है. एंड जिसने ये बात समझ ली कि मुझे खुद को ही देखना है, उसके बाद यू विल स्टार्ट गोइंग ऑन दिस पाथ, राइट? नाउ, although I can say a lot about this essay,
Let me now tell you the most important lesson in this भावनाओं में नहीं बहते हैं. Let me tell you the most important lesson. Although I feel emotionally connected to topic number 8, I will not pick this topic. Why? Because the only examples I can think of are personal, about my own life, or I can think of examples of other people. I cannot relate this with a country. I cannot relate this with, let's say, whatever is happening around, with my society, right? Because luxury is generally associated with persons, but this I can associate with countries also, with persons also, with societies also. At various levels I can associate this also. I have various ways of looking at it, right? So now if I understand the meaning, the first criteria is I should understand the meaning. Now in all three of them, the first one I don't agree with, तो उसको हटा देते हैं. The last three I understand the meaning in all three. Now what is my topic selection criteria? So first criteria was I understand the meaning. अब meaning तो मुझे तीनों का ही समझ आ रहा है. If I understand the meaning, where can I think in broad terms? मैं broad terms में कहां सोच सकता हूं? If I can think in broad terms, if I can think in various levels, in various dimensions, then I will be able to write a better answer. I'll be able to write a better answer, right? So this is my second idea. So this is what you need to look at. Now, if the selection has to happen, I might pick topic number 6, or because I feel too strongly about it and I think yaar nahi mere paas bahut sare examples, I've read a lot about this, I might pick topic 8 also. Now, my most important message to you guys is that success in the essay paper, and you will see this very commonly. So in 2022, like I'm telling you, in 2022 I had 122 marks in the essay. Okay, this was a good score, much better than average, but not the best score obviously, but better than average, much better than average. In 2022, one of my friends who was rank 111, his name was Rajat, very close friend, he is now IAS in Rajasthan cadre. He had 141 marks, and 20 number mains mein is a huge difference. He was such a close friend that I think we have spent most of our time in Labasna together, in the same room. Very, very close friend of mine. I recently, attended his wedding and everything. Very, very nice guy. So what I learned from him in his writing was that Rajat is probably one of the most well-read people I know. He is one of the most well-read people I know. He has read so much about various books. He has, studied fiction. He has read non-fiction books. He is very, very aware about the world. If you ask him who Franz Kafka was, he'll tell you. Right? If you ask him who Jean-Paul Sartre is and why did he return his Nobel Prize or his award in 1960s, he'll tell you. Right? He knows what consequentialism is. He knows what existentialism is. His optional is not philosophy. His optional is PSIR. Still, he is very, very well read. If you talk to him, you will, he's a very chill guy otherwise. But if you talk to him about these things, you will understand that he is so aware about the world that it reflects in his writing. In Labasna, we are supposed to write a journal. एक journal हमें लिखना होता है. Every day we are supposed to journal, and in the end we are supposed to submit that journal back to Labasna. They want to, see what our experiences have been like. So I read his journal once, and we used to commonly share our journals with each other. I read his journal once, and it is probably the most beautiful writing I have seen in my life, done by a compatriot. Of course, there are better fiction writers in the world, but by a compatriot, by a person who was standing next to me, right next to me, वैसी writing मैंने देखी नहीं. And most of that came from the fact that he was extremely well read. And therefore I will give you this advice today, that read as much as you can. देखो आप लोग भी
during the course of your foundation course with us, you will also be doing a course on essay. यहाँ पर आप essay भी पढ़ोगे. There is no substitute to this. जैसे वो truth knows no color वाला essay आपने देखा होगा. You might have thought that the ideas I am coming up with are things that did not come to your mind. Why? Because of my reading on that topic. So read more. Read as much as possible. The more you read, you will have more information, you will have more examples, you will have better composition. आप इंग्लिश की किताब, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो आप इंग्लिश की किताबें पढ़ोगे तो you will be able to compose your answers better, you'll be able to write, you'll see how the best writers of the world write, and you will also be able to give examples, right? For example, if the essay is truth knows no color, and I start this giving a reference to George Orwell's 1984 and his observations about truth and living in a post-truth world, the examiner will be very impressed, right? So give as many references here as possible to show the examiner that you are well read. The essay is a paper to tell you how well read you are, to show the examiner how well read you are. तो आपसे genuine request है कि whatever time you spend on Instagram, आप जो भी टाइम Instagram पे, YouTube Reels पे, मे बी नेटफ्लिक्स पे, Amazon पे स्पेंड करते हो, इफ यू कैन रिप्लेस दिस टाइम विद रीडिंग जस्ट फॉर 1 ईयर, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, अब मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूं इंस्टाग्राम पे, कर सकता हूं क्योंकि राइट आई कैन डू इट नाउ, बट फॉर द 2 years व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई हैड अ नोकिया आशा फोन. जो आशा वाला फोन होता है ना, वो था मेरे पास, कीपैड फोन. डिड नॉट हैव सोशल मीडिया एट ऑल इन दोस 2 years. If you can replace this time if you can replace with reading, it can create a much better outcome for you, create a much better outcome for you. ठीक है, आप एक बहुत बहुत बढ़िया आउटकम आप क्रिएट कर सकते हो. एंड इन दी एसे यू टेक दिस फ्रॉम मी इन राइटिंग दैट इफ यू कैन इंप्लीमेंट दिस इन योर लाइफ, अगर आप इस सब को हटा के रीडिंग पे चले जाओ, आप अपने एसे में +20 मार्क्स आज ही लिखवा लो. जो भी आपके मार्क्स आने थे 20 नंबर बढ़ जाएंगे. एंड एसे इज द मेक और ब्रेक पेपर. 141 मार्क्स इन द एसे. अब आप एक मेंस के पेपर में अगर इवन इफ यू मेस अप, you will be on the right track to get to a very good score. And there is no substitute for this. No course, no teacher, even if I am teaching you essay, no teacher can substitute for this. कोई नहीं सिखा सकता आपको वैसे लिखना जैसे आपको पढ़ना सिखा सकता है, जैसे आपको एक अच्छे author, because see, none of us who are teaching you here are authors. We don't know composition well. None of the courses that we do can replace what is here. The language, the composition, the expression, there is no replacement other than this. So read more and read as much as you can. I hope this is understood. Did you enjoy this discussion? Although I know we have spent 45 minutes on it, but I hope you guys enjoyed this discussion. I hope you learned something from this discussion of essay. ऐसे कल भी पेपर आएगा तो वी विल ऐसे कल भी पेपर आएगा तो कल का पेपर भी हम देखेंगे. एटलीस्ट विल लुक एट यस रजत यादव. कल भी पेपर आएगा तो विल लुक एट द पेपर टुमारो फॉर GS1 एंड GS2 पेपर्स विल बी आउट टुमारो. तो कल वो भी देखेंगे. मंडे को GS3 का पेपर भी देखेंगे. विल सी व्हाट दे हैव आस्क्ड इन GS3. आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी what they will ask. But the fact is, read more. And it's not like there is this particular book that you need to read. No. In general, make reading a habit. Read as much as you can. जितनी classic books हैं, जितनी ऐसी famous books हैं, if you read more, you will be a better writer no matter what you read. But read more. Read books. If you can read 20 novels from today till the day you write your mains, they can be fiction, they can be non-fiction. If you can read 20 novels, you will get 20 marks more in the essay. That is for sure. For sure. Chalo. Let us now get back. Essay से वापस आते हैं and let's get back now to our discussion of economics. So yesterday we discussed the speculative demand for money.
and we said that it is inversely proportional to the rate of interest. Yes, यहां तक हमने कल बात कर ली थी, that speculative demand for money is inversely proportional to the rate of interest. This we had proven, right? Did you read the text जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, आपने वो टेक्स्ट रीड किया? Did you read this? होमवर्क दिया था आपको. Did you read this text? All right. Now we have so far seen with regards to, अगर मैं एक समरी आपको बताना चाहूं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा इन द चैप्टर ऑफ मनी. In the chapter of money so far, we have first understood the barter system and इसके क्या क्या problems हैं. After understanding the problems of the barter system, we have then understood why money was important. मनी हमारी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स मनी सॉल्व कर रहा था. Then from here we try to understand what will be the characteristics of money. So we understood these characteristics. Then we have seen the basic evolution of money. When we were seeing the evolution of money, we then tried to understand this evolution of money. We tried to understand that, okay, there was firstly the full reserve system. Then there was the fractional reserve system. And then finally there was the limited reserve or minimum reserve system. We also saw how RBI came into the picture, or why there was specialization and the need for a central bank, and how this has evolved. After this, we came to the next topic, which was the demand for money. Now, in the demand for money, we understood two things. One was transactive demand and one was speculative demand. देखो, जितनी आराम से बिना नोट्स खोले मैं बोर्ड पे ये टॉपिक्स लिख रहा हूं, उतनी ही कंफर्टेबली आपको भी ये चीजें लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए. अगर मैं आपको बोलता, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती, तो मे बी आई वुड हैव आस्क्ड वन ऑफ यू टू कम एंड से कि अच्छा यार बताओ क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक, बोर्ड पे लिख के दिखाओ. तो you should be just as comfortable because we are reading in a very logical sequence. Now, in the demand for money, we understood that there is a transactive demand and there is a speculative demand. When we try to understand a transactive demand, in the transactive demand, what did we say? We understood an equation. Money demanded for transactions into velocity of money is equal to price level into output, which was basically GDP. So I can say that money demanded for transactions is equal to GDP upon velocity of money. What is the meaning of velocity of money? एक बार बताना. Meaning of velocity of money. Meaning of velocity of money. How often money changes hands? How often money changes hands? जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, A to B, B to C, C to D, 3 times money was changing hands. How often money changes hands is velocity of money, right? Now, अगर आप ये पूरे इकोनॉमी के लेवल पे देखो, if you try to look at this at the level of the entire economy, you will understand that this is a behavioral factor. When we are, let's say, during the times of October, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर में दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, that will be the festive season. In the festive season, you generally see velocity of money is more. Why? Why is velocity of money more in the festive season? Because people generally buy more things.
So more transactions happen, more velocity of money is there. In, let's say, times of a slowdown, let's say during COVID transactions were lesser, so velocity of money was lesser. So velocity of money, I can say, depends on the time period. It depends on the time period, right? Is this fair? That this velocity of money at the economy level depends on the time period, कि किस टाइम की बात हो रही है. It is basically, we call this something as a behavioral factor. Depends on the behavior of people. जैसे लोग बिहेव करेंगे वैसा ये होगा, राइट? सो इट्स अ बिहेवियरल फैक्टर. अगर लोग आज ऐसा बिहेव करने लगे कि दे वुड, लेट्स से, हैव मोर एंड मोर ट्रांजैक्शंस एवरी सिंगल डे, तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगा. अगर लोग ऐसा बिहेव करने लगे कि नहीं, वी विल नॉट ट्रांजैक्ट अ लॉट, वी विल जस्ट कीप द मनी विद आवरसेल्व्स, हम सेविंग्स करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मनी घट जाएगी, राइट? सो इट्स अ बिहेवियरल फैक्टर, इट्स अ बिहेवियरल फैक्टर. The other thing that we saw in demand for money was speculative demand. The speculative demand for money. Speculative demand for money was MDS. We proved that it was inversely proportional to rate of interest today. Inversely proportional to rate of interest today. So I can write that speculative demand for money is equal to some constant K divided by rate of interest. ये कांस्टेंट क्या है मैटर नहीं करता, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. आज का अगर मुझे लगेगा टुडे, इफ आई फील रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, मुझे आज लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो अब कैलकुलेशन करो अपने दिमाग में जो हमने कल सीखी थी. डू दिस कैलकुलेशन. टुडे आई फील that rate of interest is high. That means tomorrow rate of interest will fall. If rate of interest will fall tomorrow, that means what will happen to asset prices tomorrow? Tomorrow asset prices will go up. If tomorrow asset prices will go up, then then what will be my decision today? Today what will I decide? मुझे लग रहा है आज तो ये पेन 10 रुपए का है, आज तो ये बॉन्ड 10 रुपए का है, कल 11 रुपए का हो जाएगा. What will be my decision? Buy today. If I am saying I want to buy today, I want to give my money and take assets. Today I want to give my money away and take some assets like bonds, like shares, gold, कुछ भी. I want to give my money and take assets. That means what is my demand for speculation? आज मैं कितना पैसा रखना चाहता हूं अपने पास? I want to keep less money, I want to have more assets. मैं asset, अपना पैसा तो मैं दूर देना चाहता हूं. I want to give my money to you and take assets from you. So my current demand for speculation is low. Today rate of interest is high, MDS is low. यही हमने कल देखा था. ये कैलकुलेशन आपके बोर्ड पे समझ आ रही है आपको? Are you able to understand this calculation on the board? हमने पढ़ा है ये तो कल ही. सेम, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग यस्टरडे. अब so I have understood that if I look at the total demand for money, इसमें तीन चीजें थी जो प्रिकॉशनरी मोटिव था. वी सॉ थ्री थिंग्स: ट्रांजैक्टिव, स्पेकुलेटिव एंड प्रिकॉशनरी. प्रिकॉशनरी को हटा देते हैं, वो तो इमरजेंसी फंड है, वो कुछ अलग से कांस्टेंट है. टोटल डिमांड फॉर मनी, लेट्स से मनी डिमांडेड टोटल will be equal to transactive demand and speculative demand. So MD transactive plus MD speculative. MD transactive क्या है? What is transactive demand? GDP divided by velocity of money plus MD speculative is some constant divided by R. Some constant divided by rate of interest. If I solve for this, अगर मैं इसको solve करूं, तो अब
I know that this is the figure. This is the figure which is the total demand for money. Right? अब देखो, GDP at a time depends on production of a country. तो मैं अभी के लिए फिक्स मान सकता हूं. I can consider के just for the purpose of this calculation, GDP I can consider fixed. GDP बढ़ेगा तो टोटल डिमांड बढ़ जाएगी. Yes, इस कैलकुलेशन से पता चल रहा है that यहां पर ये GDP अगर बढ़ेगा तो टोटल डिमांड बढ़ जाएगी. ये तो कांस्टेंट ही है, इसको छोड़ देते हैं. Velocity of money is a behavioral factor. Depends on how people are behaving in the economy. तो जीडीपी बढ़ेगी तो टोटल डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी. अब इंटुइटिवली सोचो, लॉजिकली सोचो, बिल्कुल सही बात है भाई. जीडीपी बढ़ेगी मतलब ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, मोर इनकम, मोर एक्सपेंडिचर, मोर प्रोडक्शन. तीन तरीके हैं जीडीपी मेजर करने के, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन. जीडीपी बढ़ रही है मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बढ़ रहे हैं. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जीडीपी? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, राइट? पीपल विल आस्क फॉर मोर मनी क्योंकि उन्हें वो गुड्स खरीदने होंगे. तो जीडीपी बढ़ेगी तो टोटल डिमांड बढ़ जाएगी. बिल्कुल सही बात है. वेलोसिटी ऑफ मनी इज बिहेवियरल फैक्टर. अब इसको भी हम इंटुइटिवली सोच सकते हैं. अगर वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ गया, मान लो मनी इज चेंजिंग हैंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली. मैं आपको दे रहा हूं ये नोट, ये इसको दे रहे हैं, ये इसको दे रहे हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी नोट चेंज हो रहे हैं. तो मुझे ज्यादा नोट्स नहीं चाहिए. समझ आ रही है बात? बहुत जल्दी जल्दी नोट्स चेंज हो रहे हैं. मैंने आपको दिया, आपने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने मेरे को वापस दिया. एक सेकंड में ही ये चेंज हो रहे हैं नोट्स. तो मुझे 2-3 नोट चाहिए ही नहीं, मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा. So if velocity of money increases, total demand will go down. But these are different factors. These are not related to the price of money. अब ये वाली टर्म देखते हैं. ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो. दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी. ये हमने प्रूव किया अभी स्पेकुलेटिव डिमांड में. सो द फाइनल रिलेशन दैट आई कैन राइट इज दैट द टोटल डिमांड फॉर मनी, जो मनी की टोटल डिमांड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी. जीडीपी बढ़ेगा टोटल डिमांड बढ़ेगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये भी ठीक है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये तीन बातें मैं लिख सकता हूं. ये तीन समझ आ रहे हैं? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स? अब कल रात को जब क्लास खत्म हुई, दिस वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू. I was trying to show you this. That now if I use the law of demand, I can say ceteris paribus, all other things remaining constant. So GDP remaining constant, velocity remaining constant. Ceteris paribus, quantity demanded of money is inversely proportional to price of money. What is price of money? Interest rate. कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये? कुछ देखा देखा सा लग रहा है ये? क्या है? वी हैव जस्ट कम बैक टू लॉ ऑफ डिमांड. आर ऑल द टॉपिक्स कनेक्टेड नाउ? लॉ ऑफ डिमांड फॉर मनी. लॉ ऑफ डिमांड फॉर मनी है ना? सो नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मनी. इकोनॉमिक्स में कौन सा ग्राफ बनाते हैं हम? प्राइस क्वांटिटी ग्राफ. दिस इज प्राइस. प्राइस in this case is price of money.
What is the price? Interest rate. Price of money is interest rate. So I can say interest rate. And I can draw the graph of demand for money. Graph will look like this. हम याद है आपको कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ये दिखता है ऐसा है. फॉर आर सिंप्लिसिटी ड्रॉ इट लाइक दिस. यू रिमेंबर दिस? ये लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा ग्राफ बनाया था, मैंने आपको बताया था इट लुक्स लाइक दिस, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं, एक ही बात है. सो आई कैन ड्रॉ द डिमांड कर्व फॉर मनी at ceteris paribus, everything else remaining constant, this is what demand for money will look like, right? Now tell me, if GDP of a country increases, what happens to this graph? What should I do to this graph if GDP increases? अगर GDP increase करे तो इस ग्राफ का क्या करूं मैं? सोच के बताना. शिफ्ट आउटवर्ड. वेरी गुड यार, शानदार. अगर जीडीपी इंक्रीज हो तो ये ग्राफ आउटवर्ड शिफ्ट होके ऐसे शिफ्ट होके ऐसा दिखने लगेगा, राइट? दिस इज क्लियर. नाउ आई हैव द डिमांड कर्व फॉर मनी. व्हाट इज द अदर थिंग दैट्स नीडेड? द सप्लाई कर्व ऑफ मनी. So let us now come to the second topic for today, which is money supply. Supply curve for money बनाते हैं. Who supplies money in the economy? चलो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं. कल ये काम अथर्व ने किया था. Who supplies money? This is question 1. Second question is, does this entity care about price of money? When they decide. थोड़े से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेगा. तीन क्वेश्चन हैं. पहला, हु सप्लाइज मनी इन द इकोनॉमी? दिस इज क्वेश्चन 1. अब जनरली हमने क्या देखा है? हमने देखा है दैट वी हैव सीन दिस रूल, लॉ ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस. हमने जनरली ये रूल देखा है, बट ये रूल था प्रोड्यूसर्स के लिए. और ऐसा ये क्यों था? बिकॉज प्रोड्यूसर्स वांटेड टू हैव प्रॉफिट. इसीलिए सेकंड क्वेश्चन है कि जो भी ये एंटिटी मनी सप्लाई करती है इंडियन इकोनॉमी में, जो भी एंटिटी मनी सप्लाई करती है, क्या ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है? क्या ये इसलिए है यहां पे कि ये प्रॉफिट बना सके? So does this entity care about the price of money when they decide about supply, or do they care about something else? कल जब हमने अथर्व को कुछ बनाया था, अथर्व का काम क्या था? प्रॉफिट बनाना था या कोई और चीज इंश्योर करना था जिससे मेरी पूरी करेंसी चलती है? ये याद करना है कि does this entity care about price of money, or do they care about something else? कोई और चीज जो वो इंश्योर करना चाह रहे थे जिससे मेरी पूरी इकोनॉमी चलेगी. ये सेकंड क्वेश्चन है. थर्ड, अगर आपने पहले दो का आंसर कर लिया तो आप थर्ड का आंसर कर पाओगे. मनी का सप्लाई कर्व कैसा होगा? व्हाट शुड द मनी सप्लाई कर्व देन लुक लाइक? आपको मैं 3 मिनट देता हूं टू थिंक अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस. लेट्स सी व्हाट यू कम अप विद. एंड फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा.
हाँ जी, बताओ जी, टेल मी द आंसर्स ऑफ ऑल द 3 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड देन विल शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बताओ. आरबीआई नो वर्टिकल. शाबाश, पढ़ा आ गया यार तुम लोगों को. इकोनॉमिक्स ठीक पढ़ाता हूं मैं, इसका मतलब. सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस कौन दे रहा है यार? अथर्व का काम कल क्या था? वॉज इट टू मेक प्रॉफिट और वॉज इट टू एंश्योर ट्रस्ट इन द इकोनॉमी? खुद लॉजिक सोचो यार, अगर इसका आंसर आरबीआई है, क्या आरबीआई ये सोच के मनी सप्लाई करेगा इकोनॉमी में कि यार हमारा प्रॉफिट हो जाए, बाकी देखी जाएगी, इकोनॉमी का कुछ भी हो जाए, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए? ये सोचेगा? ये आरबीआई सोचेगा, सी दिस इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर. अपने सामने कोई भी करेंसी नोट खोलो, आपको कल एक करेंसी नोट दिखाया था, आरबीआई गवर्नर का साइन है उस पे. आप आरबीआई गवर्नर के साइन की वजह से मान रहे हो कि ये जो नोट है ना, इसकी वैल्यू 200 रुपए है. तो आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई? अगर आप आरबीआई गवर्नर हो एंड यू आर साइनिंग द नोट, व्हाट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? मोस्ट लोगों ने सही आंसर दिया है. ट्रस्ट, मेंटेन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी. लोग ये ना बोलने लगे यार कि एक कागज का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं है. राइट? मेंटेन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का. सो विल दे केयर? दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ना. विल दे केयर अबाउट प्राइस ऑफ मनी? नो. नाउ यू आर सप्लायर, यू डोंट केयर अबाउट प्राइस ऑफ मनी. याद करो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट लोगों ने सही आंसर दिया, फिर भी कुछ लोगों का आंसर गलत था. मुझे ये चीज सही नहीं लगी यार. अगर आपको पता है, अगर आपने ये दोनों का आंसर सही दे दिया है, देन यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स गिविंग द थर्ड आंसर. You are a supplier who does not care about price of money. That means प्राइस कुछ भी हो, कुछ भी प्राइस हो, आपकी सप्लाई उतनी ही है. No matter what the price is, no matter what the price is, you will supply whatever is right for trust. अगर आपको लगता है इतनी सप्लाई बहुत है, अब प्राइस यहां हो, प्राइस यहां हो, आप इतनी सप्लाई बहुत करोगे क्योंकि आप ये सप्लाई ट्रस्ट के लिए कर रहे हो. यू आर नॉट सप्लाइंग दिस फॉर मनी, you are not supplying this for making profit, you are only supplying this to ensure trust in the economy. So when the supply does not care about the price, what do we call it? Perfectly non-responsive or perfectly inelastic. है ना? कई लोगों ने सही आंसर दिया, बट जिन्होंने गलत किया, ये देखो, ये बेसिक्स आप गलत करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा. If it is perfectly inelastic, what will the shape of curve look like? Vertical. एग्जैक्टली वर्टिकल. भाई इतना प्राइस है तो भी यही सप्लाई है, इतना प्राइस है तो भी यही सप्लाई है, इतना प्राइस है तो भी यही सप्लाई फिक्स्ड है. प्राइस कुछ भी हो जाए, इतना ही सप्लाई करेंगे. दिस इज व्हाट द सप्लाई कर्व विल लुक लाइक. सो लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ मनी नाउ. दिस वाज द डिमांड कर्व ऑफ मनी. अब मुझे क्या बनाना है? सप्लाई कर्व ऑफ मनी. दिस इज द सप्लाई कर्व. सो आई कैन से सप्लाई ऑफ मनी. Supply of money. Now, RBI has the option. RBI has absolute control. RBI has absolute control on money supply. है ना? RBI's control of money supply. RBI controlling money supply. कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं. RBI's control of money supply is nothing but monetary policy. One of the tools to meet the 4 macroeconomic objectives. This is what we have read. Monetary policy is one of the tools to meet the 4 macroeconomic objectives. On this curve, what can the RBI control? RBI can control supply of money. Now, ये चीज आप में से बहुत लोगों ने पहले पढ़ी होगी, रटी होगी. Now you will understand it fully with the help of 2 graphs. जो बोर्ड पे लिखा है वो समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है, I will show you something so interesting now.
कि आपके जितने भी आज तक के, आपने ये चीजें बहुत बार पढ़ी होंगी, बट टुडे इट विल बिकम एब्सोल्युटली क्लियर। बोर्ड पे जो लिखा है वो समझ आ रहा है? वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड दिस, RBI can control the money supply, right? So what RBI can do is use monetary policy. Let's say that RBI takes one action. RBI यहां पर एक एक्शन लेती है, RBI takes an action that I will decrease the money supply. RBI कहती है हम मनी सप्लाई कम कर देंगे. What will be the movement on this graph? Which graph will move and where will it move? Red or green, which graph will move and where will it move? Step by step answer दो, खुद deconstruct करो. Where will it move? Supply curve will move inward. Very good. First answer is correct. Supply curve will move inward. Supply curve is now here. Second question. ध्यान से आप ही जवाब दोगे, आप ही समझोगे. Second question. What will be the effect? ये जो अंदर मूव किया, इसका इफेक्ट क्या होगा in terms of interest rate? What will be the effect on interest rates? How will interest rate get affected? Effect of interest rate. इस ग्राफ का इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट होगा? Very good. Interest rate will increase. Again, let's follow step by step. Interest rate earlier was here. This was the interest rate. Now this is the interest rate. Interest rate has increased. So I can say RBI reduced the money supply and interest rates in the economy have increased. Now कई लोगों को कभी कभी ये डाउट आता है, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि कौन सा इंटरेस्ट रेट है. दिस इज ऑल द इंटरेस्ट रेट्स. सारे इंटरेस्ट रेट्स लिंक्ड होते हैं. जैसे कि मैंने बैंक में पैसे दिए, बैंक मुझे, ऑल्दो बैंकिंग में दिस विल बिकम मोर क्लियर, मैंने बैंक में पैसे दिए, बैंक मुझे कुछ सेविंग्स इंटरेस्ट रेट देगा. बैंक ने मान लो मुझे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, फिर बैंक आगे लोन देगा. बैंक आगे लोन दे रहा है 10% इंटरेस्ट रेट पे. बैंक ने मेरे से 100 रुपए लिए, बैंक हैज टू गिव बैक टू मी नेक्स्ट ईयर 104 रुपीज, 4% rate of interest. Bank will give loan of 100 rupees. Bank will take interest on that loan of 10%. So I gave 100 rupees to the bank. Bank will return 104 rupees. Bank gives loan further of 100 rupees. Bank will get 110 rupees. So bank 6 रुपए कमाता है. This is how banks make money. So all the interest rates are connected. If I say interest rates go up, savings interest rate also goes up. Loan interest rate also goes up. Interest rates go up. Ab third question for you guys. I have established that interest rates go up. What is the effect of this on aggregate demand? Effect जो बताना है वो components of aggregate demand के हिसाब से बताना है. Which components of aggregate demand will get affected and what will happen? ये बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कौन कौन से अफेक्ट होंगे? विच कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल गेट अफेक्टेड? ओनली कंजम्पशन है ना? दो होंगे ना, तो दोनों लिखो. कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस. दोनों एक नहीं, दोनों लिखो ना, पूरा बताओ, ऐसे नहीं. कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ विल रिड्यूस. सो एग्रीगेट डिमांड हैज 4 कंपोनेंट्स, C, I, G and X minus M. This investment will go down and consumption will go down. So overall I can say aggregate demand will go down. ठीक है भाई, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बना लेते हैं. हमें तो आता है एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाना. This is, let's say, current aggregate demand 1. This is aggregate supply. Aggregate demand will go down. आप ही कह रहे हो, मतलब
दिस कर्व विल मूव इनवर्ड. अब यहां आ गई एग्रीगेट डिमांड. This was the earlier price level PL1. This is the next price level PL2. What is the effect in terms of price level? What is the effect in terms of price level? क्या हुआ price level को? क्या हुआ price level को? Price levels come down. Now look at the elegant conclusion. When RBI reduces the money supply, price levels come down and inflation is controlled. Inflation comes down, but growth also comes down. Growth भी कम होती है. Remember inflation growth trade-off. I hope this is clear. But ये आपने कितनी बार पढ़ा है? बहुत बार आपको इकोनॉमी में रटवाया गया होगा कि आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कम कर देता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है. And now you have the graphical proof in front of you. Is it clear? You have the graphical proof in front of you. RBI decreases the money supply and inflation is controlled. But growth also comes down. कुछ रटना तो नहीं पड़ा. Nothing to mug up. Everything very logically we have constructed. इसलिए मैं आपको कह रहा था पूरी इकोनॉमी में I will not make you mug up anything. We'll just deconstruct everything very very logically अगर आप याद रखोगे तो. Now same task for you. Task for you is if RBI increases the money supply. आपको 3 मिनट मिलेंगे. देखो आंसर देना बहुत आसान है क्योंकि आंसर तो ऑब्वियसली उल्टा ही होगा जो हमने अभी लिखा है उसका. बट इफ आरबीआई इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, योर टास्क इज मेक द ग्राफ्स. मेक द ग्राफ. आदत होनी चाहिए आपको. एंड टेल मी द कंक्लूजन. आरबीआई ने अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करी तो क्या होगा? मेक द ग्राफ एंड टेल मी द कंक्लूजन. यू हैव 3 मिनट्स. मैं भी बोर्ड पे बनाऊंगा. इन 1 मिनट आई विल आल्सो स्टार्ट मेकिंग ऑन द बोर्ड. अपनी नोटबुक में ग्राफ बनाइए एंड टेल मी व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन हियर. चलो मैं भी बनाता हूं. आई होप आप में से कई लोगों ने तो बना लिया होगा. आई विल आल्सो मेक. पहले मैं बना रहा हूं मनी सप्लाई का ग्राफ. प्राइस एंड क्वांटिटी. प्राइस ऑफ मनी इज इंटरेस्ट रेट. आई नो दिस इज डिमांड फॉर मनी. दिस इज अनचेंज्ड. I know this is supply of money, money supply. RBI has decided to increase the money supply. So this is money supply 2. In this case, what can I say? Interest rates have decreased. Interest rates have decreased. If interest rates have decreased, what is the effect on aggregate demand? बिल्कुल logically चलेंगे. Aggregate demand पे क्या effect होगा? Interest rate कम होगा तो consumption will increase and investments will increase. That means overall aggregate demand will increase. Once I know that aggregate demand has increased,
Now let me try and plot this. This is the current equilibrium, aggregate demand 1 and aggregate supply. Aggregate demand has increased, means it has reached here. So this is aggregate demand 2. Price levels have gone up, output has gone up. So because of this decision, I can say that conclusion is RBI has increased the money supply, leading to rise in inflation. RBI increases the money supply, inflation increases, but there is also increase in growth. Growth भी हुई है, inflation भी हुई है. Is this clear? You were able to, I hope you guys were able to draw this graph. ठीक है? I hope you were able to draw this graph. Now the conclusions are clear to me. The conclusions are clear to me. What happens in the case of, we have seen this, we have seen the money demand, we have seen the money supply, what happens, and what happens here, that money supply increased, interest rate comes down, consumption increase, investment increase, aggregate demand goes up, price level goes up. We have seen this effect, right? Up. Now let's read. Now we have to read. Okay. Now the next topic that I'm going to show you, I think 4 questions have come in prelims in 10 years from this 2 pages. From these next 2 pages 4 questions have come, and जितने भी इन्फ्लेशन, मनी और बैंकिंग के क्वेश्चन हैं वो हम सब एक साथ में I will do in one class. One test of about 100 questions will be there for you. About 100 questions, one test, one class I will take, जिसमें इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग तीनों के सारे क्वेश्चन होंगे. 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा एंड दैट विल बी लाइक प्रीलिम्स फॉर यू. उसका प्रॉपर कट ऑफ डिसाइड करेंगे और उसका टेस्ट लेंगे. अब लेट्स रीड फ्रॉम हियर. सी, money is created by the central bank. Money is created by the central bank, right? Now money created by the central bank gets multiplied by banks. अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी. अभी आप कहोगे कैसे. I'll just come to this. इसको मैं आऊंगा, मैं इस पे आऊंगा. I'll teach you this today only, how money gets multiplied by banks. ठीक है? And this leads to the actual money circulating in the economy called the money supply. Right? How money gets multiplied, we'll see. Okay? How much money gets multiplied? Agar RBI creates 1 rupee, central banks can make it into 5 rupee also. Central banks can multiply it into 7 rupees also. ये level कितना होगा ये भी RBI ही decide करता है. We'll see this thing today only. This is called money multiplier. इस पे भी बहुत बार question आया है पेपर में. We'll see this today only. Right? And this is the actual money circulating in the economy called money supply. Now, central banks, when they are controlling the money supply, RBI is controlling the money supply. RBI knows that its control of money supply will have an effect on inflation. अभी हमने देखा RBI money supply कम करता है, बढ़ाता है, inflation पे फर्क पड़ता है, price levels पे फर्क पड़ता है. RBI knows its control of money supply will affect growth. Right? There is one more thing that gets affected by this money supply. That actual thing is exchange rates, but we'll come to this. अभी यहाँ पर one more thing ही लिखा है. It is actually exchange rates, but we'll come to this. We'll come and understand this when we read about international economics. तो अभी इसको one more thing लिखा है. जब हम international economics पे आएंगे, this will become evident to you that even exchange rates get controlled by money supply. If RBI supplies more money, then what happens to dollar rupee exchange rate? If RBI supplies less money, what happens to dollar rupee exchange rate? We'll see. अभी इसको छोड़ देते हैं. Let's leave it for now. ठीक है? So when RBI is deciding कि हमें कितनी money supply करनी है, देखो हो क्या रहा है. I'll just write on the board for clarity.
RBI decides to supply some amount of money. RBI decides to supply some amount of money to the economy. This gets multiplied. मान लो आरबीआई ने डिसाइड किया हम सर्कुलेट करेंगे 100 रुपीज. This gets multiplied through the banking system. How it gets multiplied, we'll see. Gets multiplied through the banking system, becomes 500 rupees. And how much multiplication? यहाँ कितनी multiplication हुई है? 5x. 5 times multiplication हुई है. How much multiplication happens? Even this is controlled by RBI. So RBI controls this and RBI controls this. Even this is controlled by RBI. कितने पैसे आएंगे और कितनी multiplication होगी, ये भी RBI कंट्रोल करता है. मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है हम देखते हैं. Since both these factors are controlled by RBI, RBI controls the final money supply in the economy. This is the final money supply. RBI controls the final money supply in the economy. How does RBI decide? How does RBI decide कि कितनी रखनी है मनी सप्लाई? RBI ये भी कंट्रोल करता है और ये भी कंट्रोल करता है. तो RBI कैसे डिसाइड करता है कि ये नंबर कितना रखना है और ये नंबर कितना रखना है? RBI looks at, RBI को पता है कि इन नंबर्स के बेसिस पे हमारी इन्फ्लेशन भी इफेक्ट हो सकती है, तो RBI इन्फ्लेशन भी देखता है. RBI को पता है कि ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है, तो RBI ग्रोथ भी देखता है. एक और चीज भी है, वो भी है एक्सचेंज रेट भी है. वो कैसे है वो बाद में देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में. इन तीनों चीजों को दिमाग में रखता है. बट व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रस्ट. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट. RBI अल्टीमेटली wants to look at that people maintain trust. मान लो ऐसा हो कि इंडिया में इकोनॉमी में ग्रोथ ही ना हो, 0% ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ हो जाए इंडियन इकोनॉमी की. विल यू कीप ट्रस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी? नो. ऐसा हो जाए $1 इक्वल टू 20 लाख रुपीज हो जाए, विल यू ट्रस्ट द इंडियन इकोनॉमी? नो. आप कहोगे यार ये पेपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. ऐसा हो जाए कि इंडिया में इन्फ्लेशन हो जाए 5000%, कि आज ये पेन 10 रुपए का है, अगले साल ये पेन हो जाए 500 रुपए का, 50 टाइम्स बढ़ जाए. विल यू ट्रस्ट द इंडियन इकोनॉमी कि यार ये पेन देने के लिए 500 रुपए देने पड़ रहे हैं? आप ये नहीं, आप पेन खरीदना बंद कर दोगे, आप इस नोट की वैल्यू करना बंद कर दोगे. आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आरबीआई ने उस नोट पे साइन किया हुआ है. आरबीआई ने उस नोट पे साइन किया हुआ है. If RBI has signed that note, its ultimate objective is trust. So RBI's ultimate objective is that you maintain trust in the economy. और अब हम RBI के functions देखेंगे. We will see that RBI's functions are all controlled by the fact that you maintain trust in the economy. आप economy में trust maintain करते रहो. This RBI wants. ठीक है. अब कैसे इंश्योर होगा ट्रस्ट? इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहनी चाहिए, ग्रोथ भी डिसेंट रहनी चाहिए, एक्सचेंज रेट भी ठीक रहना चाहिए. इन बेसिस पे, इन तीन बेसिस पे, on the basis of these three factors, RBI can ensure that you are maintaining the trust in the economy. So on the basis of these three factors, RBI decides how much money they are creating and how much money is going to be multiplied. समझ आ रही है बात? मनी मल्टीप्लिकेशन में बताता हूं, ये समझ आ रहा है? फिलोसफिकल बेसिस समझ आ रहा है of what we are discussing? Are you able to understand the philosophical basis of what we are discussing? Good. अब देखो, now see, now RBI controls one, how much money they are creating. This is called M0 or M0. आएंगे इस पे. RBI controls how much money they are creating, M0 or M0. They are controlling the multiplication factor. Which is small m. This multiplication factor is called, as the name suggests, money multiplier. Money multiplier, right? Final money supply will be final money circulating. Money circulating in the economy. जो एक्चुअल मनी सर्कुलेट कर रहा होगा वो कितना होगा? M0 which RBI has created into
जितना वो मल्टीप्लाई हुआ, जैसे हमने देखा था 100 इंटू 5, तो मनी सर्कुलेटिंग विल बी m0 इंटू m, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू रीड हाउ डू वी मेजर दिस, हम कैसे काउंट करते हैं कि कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, ये देखने वाले हैं। वंस वी विल सी दिस, देन वी विल सी हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स, देन वी विल सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बाय बैंक्स। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ मनी, हाउ मच मनी इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है, राइट। अब देयर आर डिफरेंट वेज टू मेजर दिस, ये जो फाइनल फिगर है मनी सर्कुलेटिंग, इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। दिस इज इक्वल टू m0 इंटू m, बट इसे मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। सी, सो वी सी मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, money circulating in the economy is money multiplier m into m0. m0 is initial amount of money created by RBI. मैंने आपको जैसे कहा था, RBI creates 100 rupees, gets multiplied by 5, becomes 500 rupees, right? So RBI ने initially कितना create किया? 100 rupees. How much RBI ने 100 rupees create किया, इकोनॉमी में कितना आया? 500 रुपए, because multiplied by 5. So what was initially created by RBI, जो RBI ने 100 rupees create किया, that is called m0 or high powered money. RBI created 100, multiplication factor was 5, so economy में आया 500. So here 100 is m0 or high powered money, 5 is money multiplier, and this is the final money supply, final money circulating in the economy. अब इस फाइनल मनी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर 4 मेजर्स ऑफ दिस फाइनल मनी, दे आर कॉल्ड m1, m2, m3 एंड m4. व्हाट आर वी मेजरिंग? कि इकोनॉमी में एक्चुअली कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है, दिस वी आर मेजरिंग, ठीक है। सी, दिस इज वन थिंग, दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई विल से दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, बिकॉज का कोई लॉजिक नहीं है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। Before I explain what is M1, M2, M3, M4, let me explain to you the meaning of demand deposits and time deposits. देखो, you go to the bank, open a current account or a savings account. आपने डिपॉजिट करा बैंक में पैसा, आपने कहा मेरे को सेविंग्स अकाउंट खोलना है। यू ऑल नो व्हाट अ सेविंग्स अकाउंट इज। यू वेंट टू द बैंक एंड यू ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट। नाउ इन दिस सेविंग्स अकाउंट व्हेन कैन यू गेट द मनी बैक? आप पैसे वापस कब ले सकते हो? मैंने आज मान लो सेविंग्स अकाउंट खोला, तो मैं कब पैसे ले सकता हूं सेविंग्स अकाउंट के वापस? मनी दैट आई हैव पुट ऑन सेविंग्स अकाउंट, व्हेन कैन आई गेट इट बैक? Anytime. I can get it back anytime, whenever I want, जब मन करे, है ना। सो आई कैन, इन अ करंट अकाउंट में भी सेम कहानी है। करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसेस, सेविंग्स अकाउंट इज ओपन बाय पीपल लाइक यू एंड मी। सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में आई कैन गेट द मनी बैक ऑन माई डिमांड। अभी मेरा मन करे, लेट्स से आई वांट टू ईट समथिंग, आई कैन गो टू माई बैंक, insert my card in the ATM, get 200 rupees out on demand. मेरा मन है, मैं अभी निकाल सकता हूं on demand. Current account, saving account are demand deposits. Deposit of money that you can get back on your demand. जब डिमांड करे वापस आ गया। Second example, take the example of fixed deposit. ऐसे एक रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, बट चलो वो बाद में देखेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट का एग्जांपल लो। When you do a fixed deposit in a bank, तब क्या होता है? इन द बैंक, इफ आई डू अ फिक्स डिपॉजिट, मैं कहूं यार मुझे 1000 रुपीज की फिक्स डिपॉजिट करनी है एंड एट अ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, व्हेन विल आई गेट द मनी बैक? व्हेन विल आई गेट द मनी बैक? कब पैसा मिलेगा वापस? आफ्टर 1 ईयर। After 1 year, I will get the money. So fixed deposit and recurring deposits are deposits of money that I get back after a certain time. After a certain time, वो मैं ही डिसाइड करता हूं कि अच्छा यार 1 ईयर है, 1 ईयर है, तो after a certain time, after this 1 year has passed,
I will get this money back. Now it's not like मैं 1 year से पहले नहीं ले सकता. Of course I can take it back before 1 year and there is a certain penalty associated. उससे कुछ penalty लगेगी मेरे को. But generally अगर हम normal case की बात करें, I will get this money back after 1 year, after I have spent or after this time has passed, known as time deposits. Deposits where I get the money back after a certain amount of time deposits. Deposits where I can get the money back on demand deposits. Time and demand deposits are clear है दोनों का मीनिंग. अब देखो, there are various measures of money supply. There are various measures of money supply. What am I measuring? I know that actual money circulating in the economy is high powered money into money multiplier. I am measuring this. ये कितना है? How much actual money is circulating? अब इसको मेजर करने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3 and M4. ठीक है. M1 and M2 are known as narrow money. इसमें मैं कम चीजें मेजर करता हूं, but they are more liquid. M3 and M4 are known as broad money, but these are less liquid or least liquid. What is liquidity? How readily money is available to me. कितनी जल्दी मेरे पास पैसा अवेलेबल है. How readily it is available to me. Let me give you an example. या इसी में बताओ, out of these two, which is more liquid? Which is more liquid out of these two? इन दोनों में से ज्यादा लिक्विड कौन सा है? How readily it is available, that determines liquid. Obviously demand deposits are more liquid. Good. Demand deposits are more liquid. I can get it on demand. Time deposits mein to I will have to wait. So there are 4 measures of money supply: M1, M2, M3 and M4. M1 and M2 are narrow measures, means we look at narrow things. हम एक limited number of चीजें देखते हैं. M3 and M4 are broad measures. हम बहुत सारी चीजें देखते हैं इसमें. But M1 and M2 are liquid, M3, M4 are less liquid. तो अगर मैं ऐसे देखूं M1, M2, M3, M4, going down here, as I go down, my liquidity is going down. मेरी liquidity कम होती जा रही है. M1 is most liquid, M4 is least liquid. But as I go down here, my coverage is increasing. Coverage अभी आपको समझ आएगा. Coverage is increasing. M1 covers very few amount of things, M4 covers lots of things. ठीक है. अब what do I look at in M1? M1 में मैं क्या मेजर करता हूं? This you'll have to remember. कोई लॉजिक नहीं है इसका. This is just various ways of measuring. This you'll have to remember. There is no other alternative other than remembering this. M1 is currency in circulation plus demand deposits. तो I'll write here ताकि आप भी मेरे साथ actually you do one thing. मेरे साथ लिख लो ताकि आपको याद हो जाएगा एक ही बारे में. What is M1? First measure. M1 currency in circulation plus demand deposits in banks. बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, दैट इज M1. डिमांड डिपॉजिट्स का क्या मतलब हुआ? M1 में मैं क्या क्या मेजर करूंगा? जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, लोगों के पास कितने कैश है, जैसे मेरे वॉलेट में कितना कैश है, प्लस मेरे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कितना कैश पड़ा है, ये मैं मेजर करूंगा M1 में. फॉर एवरी पर्सन आई विल मेजर करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक. ठीक है. M2 में M1 के साथ I also measure demand deposits kept in post office. आपको ये बात पता होगी that earlier this was the case in our country that you could go and deposit money even in post offices. आप post offices में भी जाके पहले पैसे deposit कर सकते थे. Now this is almost irrelevant. Why? Because now even post office has been converted to India Post Payment Bank. तो अब रेयरली ही कोई पोस्ट ऑफिस में जाके अपने पैसे डिपॉजिट करता है, बट पहले दिस वाज अ वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल यूज्ड टू डिपॉजिट देयर मनी इन पोस्ट ऑफिसेस. ठीक है. सो M1 करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स. ठीक, समझ आया?
M2, it has all the components of M1. तो इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स ये हैं, प्लस आई विल ऑल्सो मेजर द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस. दिस इज M2. और हाँ, आपको ये याद करने हैं M1, M2, M3, M4 एग्जैक्टली याद करने हैं, बिकॉज इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है. देन देयर इज M3. M3 measures M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स. तो क्लियर करता हूं आपको M3 का क्या मतलब है. यहां पर इफ आई राइट M3 includes again all the components of M1. So currency in circulation plus demand deposits of banks plus time deposits of banks. This is M3. This is M3. And lastly, there is M4. M4 has everything. M4 sees everything. So currency in circulation plus demand deposits of banks plus time deposits of banks plus demand deposits of post office plus टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस. सारी डिपॉजिट सब कुछ काउंट कर लेते हैं हम M4 में. नाउ टेल मी, जब आपको ये चार आपके सामने लिखे हैं, एंड आई होप आप लोगों ने मेरे साथ लिखा है, बिकॉज ये एज इट इज याद होना चाहिए आपको. एज इट इज आई वांट दैट दिस थिंग यू गाइज रिमेंबर. नाउ इज इट क्लियर दैट एज आई गो डाउन माय कवरेज इज इंक्रीजिंग. ये सबसे ब्रॉड है. M4 therefore called broad money, covers the most things. M3, M4 actually both are called broad money, but just for an idea, देखो सारा कवर कर रहा है. बैंक्स का टाइम डिपॉजिट भी, बैंक्स का डिमांड डिपॉजिट भी, पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट और करेंसी इन सर्कुलेशन, सब कुछ M4 सब कवर कर रहा है. तो एज आई गो डाउन द लैडर, कवरेज इज गोइंग अप, बट एज आई गो डाउन द लैडर, लिक्विडिटी इज गोइंग डाउन. यहां देखो सबसे लिक्विड है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, मतलब बैंक का सेविंग्स अकाउंट और करेंसी इन सर्कुलेशन लिक्विड है, रेडिली अवेलेबल. यहां देखो M3 में देखो करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड डिपॉजिट तो ठीक है, बट एफडी भी इंक्लूड हो गई, टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड हो गई. अब ये उतना लिक्विड नहीं है. M4 तो और कम लिक्विड है, क्योंकि इसमें तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट भी है. पोस्ट ऑफिस की एफडी तो ठीक कराने के लिए पहले पोस्ट ऑफिस जाओ, फॉर्म भरो, फिर ठीक होके आएगा, तब जाके माना जाएगा. तो एज आई गो डाउन, लिक्विडिटी इज डिक्रीजिंग बट कवरेज इज इंक्रीजिंग. ये बात क्लियर हुई. दोनों जो पिंक में बातें लिखी हैं, आर बोथ दीज थिंग्स क्लियर? याद भी हो गए होंगे आई होप. याद हो गए तो आपका टेस्ट में एक क्वेश्चन ठीक हो गया. एक नहीं, 3 क्वेश्चन ठीक हो गए अगर आपको ये याद है तो, और याद नहीं है तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए. अब देख लो. So M3 and M4, राइट? इंक्रीजिंग कवरेज, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, ये हमने देखा. इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है आपके नोट्स में, राइट? आई हैव रिटन दिस एज इंपॉर्टेंट इन योर नोट्स. ठीक है. अब नाउ we'll just take a break for 3-4 minutes, 3-4 minutes का. I'll just take a small break. I'll come back, and now after this we have to today we will study 2 things. 2 चीजें पढ़ेंगे आज. One is RBI's ability to create money. So we'll look at the income of RBI and assets and liabilities of RBI. This is one thing we'll look at, and what is seniorage, etc. ठीक है. Second, we'll look at the multiplication of money by banks. ये दोनों चीजें हम समझेंगे, right? So we'll understand both these things, the multiplication of money by banks and the money creation by RBI. Let's just take a very small break, and I'll come back and we'll do these 2 things.
ऑल राइट, देखो अभी जब रिसेंटली हमने ये एग्जाम्पल लिया था एंड वी मेड अथर्व दी आरबीआई, तो हमने क्या कहा था, अथर्व की एक बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट क्या थी? बैलेंस शीट अथर्व की थी कि एक तरफ लिखे थे अथर्व के एसेट्स। एसेट्स क्या थे अथर्व के पास? 1000 गोल्ड कॉइन्स। These are the assets. Assets, I hope you understand normal English meaning. And अथर्व की कुछ liabilities थी। Liabilities means promises that Atharv had made. He had made certain promises. What promises had he made? He had made a promise that he will exchange your gold coins. और एक्स्ट्रा सॉरी एक्सचेंज योर पेपर नोट्स, कि आप पेपर नोट्स लेके आ जाओ, आप एक्सचेंज करा सकते हो फॉर अ गोल्ड कॉइन। हाउ मेनी लाइबिलिटीज डिड ही हैव? 1 लाख सच पेपर नोट्स वर देयर। ऑल ऑफ दिस आर हिज लाइबिलिटी। आप कभी कोई कैश या पेपर नोट निकाल के देखना। इफ यू वांट आई कैन आल्सो टेक इट आउट एंड जस्ट रीड व्हाट इज रिटन ऑन अ पेपर नोट, राइट? जो आरबीआई इशू करता है, व्हाट इज रिटन ऑन अ पेपर नोट, लेट्स रीड। सो आई एम जस्ट रीडिंग। I promise to pay the bearer the sum of 500 rupees. What is written? And niche it is signed by the RBI governor. This sign is of Shri Shakti Kanta Das, तो पुराना नोट है। तो I promise to pay the note. I promise to pay the bearer sum of 500 rupees. This promise is what? Liability of RBI. Liability. On the other side, there was an asset. 1000 gold coins। ये हमने देखा था अथर्व के केस में। So RBI's example is exactly the same. It has assets and it has liabilities. Now I have read that there is a circular flow of income model. So basically there are households, there are firms, है ना, factors of production, income, expenditure, goods and services। ऐसे हमारी पूरी इकोनॉमी चल रही है। यहाँ पे there is the government, there is the external sector, there are also banks। ये तीन, ये हमने देखा है this model। Now RBI is here. RBI is not in this model. RBI is outside, right? अब पहले तो for any note that RBI prints, मान लो आज अभी इसी मोमेंट पे RBI गवर्नर डिसाइड करते हैं that we will print 10 notes of 500 rupees. RBI decides to print 10 new notes of 500 rupees। 10 नए नोट उन्होंने प्रिंट कर दिए, 500 रुपए के ताजे कड़क नोट आरबीआई ने प्रिंट कर दिए। This is 5,000 rupees. RBI just decided to print 5,000 rupees just by the manner of printing, just by the fact that these notes have been printed। RBI के मिंट में, प्रिंटिंग प्रेस में ये नोट्स प्रिंट हो गए, RBI के प्रिंटिंग प्रेस में पढ़े हैं। Does that mean that they have entered the circular flow? क्या वो अब हमारी मनी में सर्कुलेट कर रहा है क्या ये? Now in our economy are these 5,000 rupees circulating? ऐसा नहीं है। Tell me, just by printing? नहीं ना। How will these 5,000 rupees now come to the circular flow? 5,000 rupees आरबीआई के पास तो हैं, आरबीआई ने तो प्रिंट कर लिया, आरबीआई के हाथ में है यहाँ पे 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए सर्कुलर फ्लो में कैसे आएंगे? आरबीआई विल हैव टू गिव दिस मनी टू समबडी। यहां पर किसी को पैसे देने पड़ेंगे तब ये पैसे सर्कुलर फ्लो में आएंगे। और क्या आरबीआई फ्री में गिफ्ट कर देगा? नहीं। आरबीआई विल यूज दिस मनी। आरबीआई हैज प्रिंटेड 5,000 रुपीज। आरबीआई विल यूज दिस मनी टू बाय सम एसेट। है ना? तो आरबीआई लेट से किसी फर्म के पास जाता है और इनसे गोल्ड खरीद लेता है। तो आरबीआई गोज टू अ फर्म, आरबीआई सेज यू गिव मी गोल्ड वर्थ रुपीज 5,000। लेट्स से यू गिव मी 10 grams of gold।
and I will give you, although 10 ग्राम गोल्ड आएगा नहीं 5,000 रुपए में, I will give you 5,000 rupees. Now these 5,000 rupees have entered the circular flow, right? RBI got gold and RBI gave back 5,000 rupees. So this is one way. RBI can also go to the government. Government कौन सा asset देगी RBI को? RBI can give these 5,000 rupees to the government. Then government can inject this into the money, into the circular flow. What asset will government give? What asset will government give? कौन सा asset है government के पास जो मैं दे रहा था अथर्व को कल? What asset will government give? Government bond. Government will give government bond. In this case, in both these cases, look at the balance sheet of RBI. Balance sheet of RBI will always be balanced. That's why it's called the balance sheet, because it's always balanced. I didn't touch this. No, I have to refresh it. Now it's okay. All right. Let's look at the balance sheet of RBI. On the balance sheet, there will be some assets, there will be some liabilities. Now, इस case में, if let's say I am looking at the first case, this first case, if I am looking at the first case, what should I write in asset, what should I write in liability? क्या लिखूं asset में, क्या लिखूं liability में? First case में, in the first case, बताओ, what should I write? सॉरी यार, बस आपकी चैट खोल रहा हूं, एक सेकंड, 1 सेकंड. सॉरी यार, बस आपकी चैट खोल रहा हूं, एक सेकंड. ठीक है, फेयर इनफ. यार इस केस में, this case, I am considering this case. I'll just repeat for everybody. I am saying RBI ने कुछ notes print किए. Just because RBI printed those notes does not mean that this will lead automatically to these notes entering the circular flow of income. Automatically ये हमारी इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, है ना? अभी तो RBI के प्रिंटिंग प्रेस में पढ़े हैं, RBI के प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इकोनॉमी में घूमना शुरू हो गए. For this, RBI will have to go and purchase some asset, right? Because notes पे क्या लिखा है? Note पे क्या लिखा है? Promise. Notes are liability of RBI, right? अब first case में RBI ने क्या किया? RBI went to some gold dealer and RBI purchased 10 grams of gold and gave it 5,000 rupees. In this case, what should I write in asset and liabilities? In this case, यहां पर asset क्या है RBI का और liability क्या है? RBI का asset, RBI का liability. Now tell me, what should I write in this first case? क्या लिखूं यहां पर? In the first case, asset here is 10 grams of gold. Asset is 10 grams of gold.
and liability here is 5,000 rupees, है ना. अब सेकंड केस आरबीआई ने 5,000 और रुपए प्रिंट किए और गवर्नमेंट के पास जाके गवर्नमेंट को 5,000 रुपए दे दिए और बॉन्ड ले लिया. इन दिस सेकंड केस नाउ, इन दिस केस मान लो आरबीआई प्रिंटेड 5,000 मोर. इन दिस केस व्हाट शुड आई राइट? एसेट एंड लायबिलिटी. इस केस में क्या है? इन दिस केस व्हाट इज द एसेट एंड लायबिलिटी? What is asset? What is liability? Asset is now, second case, asset is bonds and liability again is rupees 5,000. ठीक है. अब देखो, अब आरबीआई ने जाके गोल्ड खरीदना है. एसेट इज बॉन्ड, लायबिलिटी इज 5,000. सही बताया आप लोगों ने. नाउ इन द फर्स्ट केस व्हाट वाज हैपनिंग? इन द फर्स्ट केस आरबीआई हैड गॉन, फर्स्ट केस में आरबीआई हैज गॉन एंड परचेज्ड सम गोल्ड. अब ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई किसी भी शॉप से जाके गोल्ड खरीद लेगा. इट्स नॉट लाइक आरबीआई विल गो टू एनी शॉप ऐसे सड़क पे चलते चलते कि चलो आज सीपी से गोल्ड खरीद लेते हैं. दिस इज ऑब्वियसली नॉट हाउ आरबीआई विल ऑपरेट. आरबीआई विल हैव सम और द अदर फिक्स्ड प्लेस. आरबीआई को कहा यार यहां से जाके हम खरीदेंगे. दिस इज द प्लेस विल गो एंड बाय फ्रॉम, राइट? वेयर दे आर श्योर ऑफ द प्योरिटी, लेट्स से, वेयर देयर इज सम कॉन्ट्रैक्ट, सम लाइसेंसेस देयर. सो पीपल विद whom आरबीआई डील्स डायरेक्टली, आरबीआई आपसे या मेरे से डील नहीं करता है. पीपल विद whom आरबीआई डील्स डायरेक्टली, आप या मेरे से तो डील नहीं करता है आरबीआई. ऐसा तो नहीं है. डज एनी ऑफ यू हैव एन अकाउंट इन द आरबीआई? नहीं ना, हमसे डील नहीं करता है. आरबीआई डील्स विद सर्टेन फर्म्स और डील्स विद द गवर्नमेंट. देखेंगे आरबीआई के फंक्शंस में, उसमें इट इज रिटन, इट इज बैंकर टू बैंक्स, इट इज बैंकर टू गवर्नमेंट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है आरबीआई में, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है आरबीआई में, सारे बैंक्स का अकाउंट, एसबीआई का, एचडीएफसी का अकाउंट है आरबीआई में. हमारा नहीं होता. इट डील्स विद बैंक्स, इट डील्स विद सर्टेन फर्म्स, इट नॉट विद पीपल. People with whom RBI deals directly with are known as primary dealers. Primary dealers. Okay. Up. Now. This being said, now let us try and understand what the RBI is doing here. तो RBI की बैलेंस शीट में, on the balance sheet of RBI, there will be some assets and there will be some liabilities. Now RBI itself is a bank. RBI खुद भी एक बैंक है. अभी के लिए RBI को भूल जाओ. अभी के लिए forget about RBI. Think about any normal bank. Any normal बैंक. आपके घर के पास जो भी बैंक हो, लेट्स थिंक ऑफ एसबीआई फॉर एग्जांपल, जब लंच टाइम ना चल रहा हो. ठीक है, तो जब लंच टाइम ना चल रहा हो, व्हाट इज एसबीआई? मान लो एसबीआई की बात कर रहे हैं. आई विल गिव यू टू ऑप्शंस, डिपॉजिट्स एंड लोन्स. विच ऑफ दीज फॉर अ नॉर्मल बैंक, आरबीआई को छोड़ो, फॉर अ नॉर्मल बैंक, which of these is an asset and which of these is a liability? कौन सा asset है, कौन सा liability है? कौन सा asset है, कौन सा liability है? सोच के बताना. Asset is that thing that will give me future income. Liability is जिस पे मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे. डेफिनेशन से सोचो यार. एसेट वो चीज है जिसपे आई विल अर्न फ्यूचर इनकम. लाइबिलिटी वो चीज है जिसपे आई विल हैव टू डू फ्यूचर एक्सपेंडिचर. खुद सोचो. देखो, अगर मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचूं, फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव, बैंक ने किसी को लोन दिया है, बैंक हैज गिवन लोन टू समबडी, बैंक विल गेट मनी इन रिटर्न.
बैंक को पैसा मिलेगा, बैंक हैज गॉटन डिपॉजिट, बैंक के पास डिपॉजिट आया है, इन द फ्यूचर बैंक विल हैव टू डू सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन दिस, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बैंक को पे बैक करना पड़ेगा, है ना। बैंक को मैंने आज एसबीआई को 100 रुपए डिपॉजिट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, अगले साल दे विल हैव टू रिटर्न 104 रुपीज टू मी, सो डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी फॉर द बैंक. Bank gives 100 rupees loan to me, next year I have to return, in the future I have to return 110 rupees to the bank. Loan is asset for the bank, तो asset होगा बैंक का loan, liability होगी deposit. With that being sorted, let us now look at the balance sheet of RBI. Let us look at the balance sheet of RBI. Tomorrow we'll read this in detail. अभी हम बस देख रहे हैं बैलेंस शीट इन आरबीआई. आरबीआई के एसेट्स क्या हैं? व्हाट आर द एसेट्स ऑफ आरबीआई? गोल्ड, गोल्ड तो एसेट है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट है. लोन्स गिवन बाय आरबीआई, आरबीआई भी लोन्स देता है, आरबीआई भी एक टाइप ऑफ बैंक है. आरबीआई किसको लोन देता है, क्यों देता है, हम देखेंगे. लोन्स गिवन बाय आरबीआई, दिस इज एसेट. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई कीप सम डॉलर्स विद इटसेल्फ. वो डॉलर्स आरबीआई के तो एसेट है, आरबीआई के लिए तो वो एसेट है, यूएस गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है. आएंगे इस पे जब एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, दिस विल बी क्लियर. देयर आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड देयर आर सम बॉन्ड्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स. इंडियन गवर्नमेंट के भी बॉन्ड रखता है आरबीआई, कुछ फॉरेन गवर्नमेंट के भी बॉन्ड रखता है आरबीआई. So these are the assets that RBI has, right? Liability, currency तो हमने देखा, currency notes, and currency notes are 98%. ये पूरी liability में maximum currency notes हैं, right? Then deposits kept with RBI. Deposits kept with RBI. बैंक है आरबीआई, मैंने आरबीआई में डिपॉजिट रखा, मैं नहीं रख सकता, बट गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स कैन कीप डिपॉजिट्स विद आरबीआई, सो डिपॉजिट्स विद आरबीआई आर लायबिलिटी ऑफ आरबीआई. एंड लास्टली बोरोविंग्स ऑफ आरबीआई, ये अभी आपको क्लियर होगा. अभी हमने देखा था डिपॉजिट एंड लोन, वी सॉ डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव. कि बैंक का पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं तो फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी, लोन इज एन एसेट. ये मैंने देखा. नाउ आई वांट यू टू थिंक अबाउट डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. अपने पर्सपेक्टिव से सोचो. यू हैव गिवन अ डिपॉजिट और यू हैव अ डिपॉजिट. आपने एक जगह सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा हुआ है या एक फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसा रखा हुआ है. फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज दिस डिपॉजिट, एसेट और लायबिलिटी? एंड यू हैव टेकन अ लोन, मैंने आपको लोन दिया है, आपने लोन लिया हुआ है. फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज द लोन? एसेट और लायबिलिटी आपके पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. ऐसे लिखो ना यार, डिपॉजिट इज डैश, लोन इज डैश. फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव डिपॉजिट इज एन एसेट, आपने डिपॉजिट किया है, फ्यूचर में इनकम मिलेगी. लोन इज लायबिलिटी, आपने लोन लिया है, फ्यूचर में आपको रीपे करना पड़ेगा, आपको कुछ इनकम यहां पर देनी पड़ेगी. सिंपल. एसेट इज समथिंग वेयर आई एम गोइंग टू गेट अ फ्यूचर इनकम. इफ आई हैव put some money in a fixed deposit, in the future I will make some money off of it. Liability is where I have to give money. If I have taken a loan in the future, I will have to give money, right? So this is the balance sheet of RBI. This is the balance sheet of RBI. एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पेजेस यहां पे लिखे हुए हैं, ये जो पेजेस यहां पे लिखे हुए हैं, प्लीज रीड दिस, प्लीज रीड दिस. कल हम इसको डिस्कस करेंगे, we'll discuss this tomorrow. I want to discuss the multiplication of money with you today. वो थोड़ा conceptual है.
तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी डिस्कस कर लेते हैं, राइट? अब ठीक है, we'll come back and read this tomorrow. We will come back and read this tomorrow. We'll come back and read this tomorrow. But I want to discuss the multiplication of money with you ताकि conceptual चीज हमारी क्लियर हो जाए. अब देखो, let's say RBI printed some money. RBI printed some money. RBI printed some money. Let's say RBI printed 1,000 rupees. And then it entered the circular flow. RBI ने इसके लिए कोई एसेट खरीदा. Let's say RBI printed 1,000 rupees. RBI went to a gold shop. RBI went to a gold shop. इस गोल्ड शॉप में इस गोल्ड शॉप ने RBI को गोल्ड दिया. And this 1,000 rupees came to this gold shop. इस 1,000 rupees को गोल्ड शॉप, ये जो गोल्ड शॉप थी, यहां पर RBI ने 1,000 rupees दे दिए और RBI को मिल गया गोल्ड. यहां तक क्लियर है? RBI got gold and this gold shop got 1,000 rupees. ये गोल्ड शॉप का कोई ओनर होगा. There will be some owner of this gold shop. This gold shop owner got 1,000 rupees. ठीक है? We are trying to see the multiplication of money. अब ये जो गोल्ड शॉप का ओनर है, ये जो गोल्ड शॉप का ओनर है, he will keep certain money with himself. कुछ मनी इसके पास कैश होगा, कुछ मनी ये डिपॉजिट कर देगा बैंक में. I am the owner of the gold shop. RBI Governor Shaktikanta Das ji came to me and said, "ये लो 1,000 rupees and give me gold." I took 1,000 rupees. I gave him gold. RBI का तो हो गया sorted. मेरे पास 1,000 rupees आ गए. समझ रहे हो ना क्या कहानी है? Now it is part of the economy. मैं गोल्ड शॉप का ओनर था, मेरे पास 1,000 rupees आ गए. मेरे पास 1,000 rupees आ गए. मेरे पास 1,000 rupees कैश आया है. Actual cash, because RBI तो मेरे को कैश देगा. I have gotten actual cash, 2 notes of 500 rupees each. I decide that I will keep 200 rupees as cash and deposit 800 rupees in my bank account. In my bank account. यहां तक क्लियर है? Till here it is clear. हम देख रहे हैं कि बैंक्स मनी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है? ऑल राइट. नाउ मेरे बैंक का नाम है SBI. So I went to SBI, and in SBI, now SBI has 800 rupees. My SBI account has 800 rupees and I have in my pocket 200 rupees. I have in my pocket 200 rupees. हम मान लेते हैं this ratio is, I'll just write one thing here, called cash deposit ratio. यहां पर मैंने कैश कितना रखा है? 200 रुपीज. एंड डिपॉजिट कितना किया है? 800 रुपीज. सो व्हाट इज कैश डिपॉजिट रेशियो हियर? 1/4. हम मान लेते हैं कि जितने भी लोग अभी इस एग्जांपल में इन्वॉल्व होंगे, दे विल ऑल कीप दिस सेम रेशियो. ठीक है? सो हुएवर इज इन्वॉल्व्ड, एंड कल हम कैश डिपॉजिट रेशियो डिटेल में पढ़ेंगे. हुएवर इज इन्वॉल्व्ड, they will keep a cash deposit ratio of 1/4. ठीक? इस एग्जांपल में जितने भी लोग हैं, आगे भी जितने लोग आएंगे, सब कैश डिपॉजिट रेशियो 1/4 ही रखेंगे. ओके? अब मेरे बैंक अकाउंट में है 800 रुपए और मेरे पास कैश है 200 रुपए. टेल मी व्हाट इज द लेवल ऑफ M1 इन दिस इकोनॉमी. इस टाइम पे इस इकोनॉमी में M1 कितना है? व्हाट इज M1 इन दिस इकोनॉमी एट दिस पॉइंट? M1 में क्या क्या दो चीजें मेजर करते हैं? कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट्स इन बैंक. तो M1 कितना है इस टाइम पे इस इकोनॉमी का? वेरी गुड, 1,000 रुपीज है. ठीक है?
अब M1 क्या होता है? M1 is a measure of money supply. It is a type of measure of money supply. It is a measure of actual money in the economy. तो हम M1 ही काउंट करेंगे. तो अभी मैंने देखा at this stage, at this first stage, I can say that M1 was 1000 rupees. अब देखो आगे क्या होता है. SBI में 800 रुपए है, मेरी जेब में 200 रुपए है. SBI has 800 rupees. In my pocket there are 200 rupees. Now what will SBI do? SBI will want to loan this money out. SBI कहेगा यार इस मनी को मैं आगे लोन करता हूं. SBI अगर पैसे रखे रहेगा तो SBI को तो मेरे को इंटरेस्ट देना है. समझ रहे हो बात? SBI आप हो, मैंने आपको 800 रुपीज दे दिए, आपने तो मुझे अगले साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस पैसे पे. तो आप कहोगे यार इस 800 को मैं लोन करता हूं ना, लेट मी लोन दिस आउट फर्दर सो दैट आई कैन अर्न सम इनकम, राइट? अब कैन SBI लोन ऑल ऑफ दिस 800 आउट? Can SBI loan out all of this 800 rupees? No. Why not? अच्छा नो तो सब लिख रहे हो. Why? क्यों भाई? Why? Why can't SBI loan out all of this? अगर SBI ने 800 के 800 रुपए लोन आउट कर दिए, इफ SBI लोन्स आउट ऑल 800 रुपीज, मान लो मैंने आज SBI में 800 रुपए डाले, अब मेरे बैंक अकाउंट में लेट्स से दिस इज माय बैंक बैलेंस, मेरे बैंक बैलेंस में क्या दिखाएगा? 800 रुपीज होगा. भाई ठीक है, SBI ने 800 के 800 रुपए आज ही किसी को लोन कर दिए. कल मैं SBI गया, मैंने कहा यार मुझे 20 रुपीज देना, मैंने कल आपके यहाँ 800 रुपए डिपॉजिट किए थे, मेरे को 20 रुपीज देना. SBI कहेगा हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो लोन कर चुके. SBI कहेगा हम तो लोन कर चुके, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. व्हाट विल दैट लीड टू? What will that lead to? I will go to the bank will say I don't have money. इससे ultimately क्या होगा? इससे ultimately I will lose trust in the economy or not? कि यार ये तो इकोनॉमी में ट्रस्ट करने का फायदा ही नहीं है. इकोनॉमी में ट्रस्ट करने का फायदा ही नहीं है. इकोनॉमी में मैंने तो 800 रुपए रखे बैंक में, मुझे वापस ही नहीं मिले. I will lose trust in the economy, right? ये बात समझ आ रही है? तो अब ट्रस्ट इंश्योर करने का, इफ SBI, I'll write this line, if SBI loans out all this money, if SBI loans out all money, I will lose trust in the economy. Trust in the economy will be gone. Whose job is it to maintain trust in the economy? किसका काम है ट्रस्ट? ट्रस्ट मेंटेन करने का काम है RBI का. तो RBI will tell SBI कि देखो यार तुम सारे पैसे लोन आउट मत करो, सारे पैसे लोन आउट मत करो, हैव सम रिजर्व्स, हैव सम मनी विद योरसेल्फ. तो RBI मान लो कहता है कि यार यू मस्ट हैव अबाउट 10% रिजर्व्स, 10% आप रिजर्व्स रख लो. ठीक है, तो SBI क्या करेगा? SBI will keep 80 rupees as reserve and it will loan out 720 rupees. It will loan out 720 rupees. This ratio here is called reserve to deposit ratio. Reserve by deposit. And what is this ratio in this case? 10%. And who has decided this reserve to deposit ratio? This has been decided by RBI. है ना? यहां तक क्लियर? 10% is just an example. यहां तक क्लियर है? SBI now has kept 80 rupees reserved and SBI has loaned out 720 rupees. यहां तक क्लियर है? Fair enough? ठीक, अब देखो यहीं से एग्जांपल लेता हूं. मान लो ये 720 रुपीज का लोन लिया उर्वशी ने.
720 रुपीज का लोन लिया है उर्वशी ने. Urvashi took this loan to buy something from Vineet. तो उर्वशी ने 720 रुपीज का लोन लिया और विनीत को ये पैसे दे दिए. उर्वशी took some loan and gave some money to विनीत. ये मनी विनीत को दे दिया. ठीक है, अब देखो, विनीत now has 720 rupees. Vineet now has 720 rupees. Of this 720 rupees, he will keep some as cash, 1/4 he will keep as cash, rest he will deposit. Right? Vineet now has 720 rupees. So 1/4 of this, which is 180 rupees, Vineet will keep as cash. And Vineet will go and deposit the rest in his bank account. So he'll deposit 540 in his bank account. His bank is HDFC. Now comes the question. And this is the last question for today. यहां पर आज खत्म करेंगे. But I want all of you to give the right answer. Please सोच के बताना. What is the level of M1 now? अब M1 का लेवल क्या है? Now I want you, all of you, to measure the level of M1. Remember, SBI ने लोन दे दिया है मेरे पैसे से, बट मेरे बैंक अकाउंट पे क्या दिख रहा है अभी भी? मैं SBI गया, मैंने SBI को 800 रुपए डिपॉजिट किए. मेरे बैंक स्क्रीन पे SBI की ऐप में दिख रहा है इसमें 800 रुपए हैं. SBI ने आगे लोन दे दिया होगा, अभी भी इसमें 800 रुपए दिखेंगे. ये बात याद रखना. इवन राइट नाउ माई ऐप, मेरे पास आज भी मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1000 रुपए ही हैं. ये बात याद रखना. नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द M1. Calculate what is the M1 in this case. बताओ क्या M1 है अब? वेरी गुड यार, शानदार हो तुम तो. अब देखो, if I have to calculate M1 in this case, what is M1? M1 is currency in circulation plus demand deposits of banks. पहले देखते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है. करेंसी इन सर्कुलेशन है, मेरे पास 200 रुपीज कैश है, तो 200 प्लस विनीत के पास कितना है 180 रुपीज कैश, तो 180 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे दिखा रहा है, मेरी ऐप में कितने पैसे हैं मेरे अकाउंट में 800 प्लस विनीत के बैंक अकाउंट में क्या दिखा रहा है 540. उर्वशी बेचारी के पास तो पैसे नहीं है, वो उन्होंने तो सारे दे दिए विनीत को. उर्वशी हैज नो मनी, शी हैज गिवन एवरीथिंग टू विनीत. इस सबको मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1720. 1720 आ गया. अब देखो, हाउ मच मनी डिड आरबीआई प्रिंट. आरबीआई ने कितना प्रिंट किया था 1000. आरबीआई ने कितना प्रिंट किया था 1000. व्हाट इज एक्चुअल मनी सर्कुलेटिंग? एक्चुअल मनी सर्कुलेटिंग आपने बनाया 1720. M1 is measure of money supply. What did I tell you? Money supply is equal to money multiplier into M0. मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी में 1720. आरबीआई ने क्या प्रिंट किया था 1000. So here multiplication factor, money multiplier in this case has come out as 1.7. Money multiplier has come out as 1.72. 1.72. समझ आया? आरबीआई ने 1000 रुपए प्रिंट किए थे, बट इकोनॉमी में कितने सर्कुलेट हो रहे हैं 1720. और मैं आगे आई कैन कीप मेकिंग दिस साइकिल कि ये 540 विनीत के बैंक में गए, एचडीएफसी भी आगे इसको कहीं लोन करेगा, वो भी बैंक में डालेगा. आई कैन कीप मेकिंग दिस. आई हैव जस्ट शोन दिस फॉर एन एग्जांपल. बट डिड यू सी दैट आरबीआई प्रिंटेड 1000 रुपीज, सर्कुलेशन में है 1720. बैंक्स हैव मल्टीप्लाइड मनी इन द इकोनॉमी.
banks have multiplied money in the economy. है ना? यार I will not explain this again. Please watch this part of the video again. हमने बहुत धीरे समझा है. साइकिल खत्म होगा. बना के देखना आगे साइकिल. जिसको लग रहा है ना कि ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, आगे बना के देखना. He is saying कि सर ये साइकिल तो आगे खत्म ही नहीं होगा. भाई HDFC के पास, जिसको ये डाउट नहीं है वो ये बात मत सुनना. HDFC के पास 540 रुपीज आए, HDFC 54 रुपीज रिजर्व में रखेगा. मान लो 500 रुपीज सर्कुलेट करेगा, किसी को देगा, उसको 500 रुपीज मिलेंगे. वो इसका 1/4 अबाउट 125 रुपीज रखेगा. अगले बैंक को क्या मिलेगा? अगले बैंक को 375 मिलेगा. इसके अगले बैंक को हो सकता है 200 मिले. कभी तो जाके जीरो होगा, साइकिल खत्म हो जाएगा. So at some point this cycle will end. At some point this cycle will end, and if you want you can draw this. You can draw the further cycle कि आगे क्या होगा. But banks have, because of the banking system, money printed by RBI has multiplied in the economy. अब समझ आ गया? Till here it is clear? जस्ट इतना स्टेटमेंट क्लियर है? अब देखो आई विल जस्ट आस्क यू 2 लास्ट क्वेश्चंस एंड वी विल एंड टुडेज क्लास. ये स्लाइड में एज इट इज रहने देता हूं. इन दिस केस if RBI decides that reserve deposit ratio will be 50%. अभी RBI ने कितना डिसाइड किया था? 10%. अगर RBI रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को 50% कर दे, from 10% it makes it 50%. What will happen to money circulation? इसको कैलकुलेट करते हैं. अब क्या होगा देखो. नाउ लिसन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड केयरफुली. मेरे पास 200 रुपए थे, कैश 800 रुपए बैंक में डाले. एसबीआई के पास 800 रुपीज है, एसबीआई को रिजर्व में रखने पड़ रहे हैं अब 400. तो एसबीआई उर्वशी को कितने का लोन देंगे? सिर्फ 400 का ही लोन दे पाएंगे. विनीत को 400 मिलेंगे. विनीत 400 में से 100 रुपीज कैश रखेगा, एचडीएफसी को देगा 300. In this case, did you see that money circulating became less? Because RBI ने रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दी. पहले HDFC को मिल रहे थे 540 रुपीज, अब HDFC को मिल रहे हैं 300 रुपीज. पहले विनीत के हाथ में आ रहे थे 180 कैश, अब विनीत के हाथ में आ रहे हैं 100 कैश. So RBI increased the reserve deposit ratio. इस केस में भी M1 कैलकुलेट कर लेते हैं. When RDR is 50%, what is the M1 in this case? यहां भी कैलकुलेट कर लेते हैं. इस केस में क्या है? M1 is currency in circulation plus demand deposits. तो currency in circulation यहां पर in this case currency in circulation held by Shivin कितनी है? 200. Demand deposits held by Shivin कितनी है? 800. ठीक है. लेकिन इस केस में currency in circulation held by Vineet कितनी आएगी? 100 रुपीज. डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय विनीत कितनी आएगी? 300 रुपीज. तो अब M1 क्या हुआ? नाउ M1 विल बी 1400 रुपीज. नाउ आई कैन से M1 इज इक्वल टू स्मॉल m मनी मल्टीप्लायर इनटू M0. ये है 1000, M1 है 1400. तो अब मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया? 1.4 हो गया ना. सो कैन आई से दैट फर्स्टली money multiplier small m is inversely proportional
to reserve deposit ratio. And RBI controls this reserve deposit ratio. This is controlled by RBI. समझ आया? आरबीआई ने रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बढ़ाया, मनी मल्टीप्लायर कम हो गया. ठीक है. अब एक चीज आपको सोच के आनी है और कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. प्लीज थिंक अबाउट दिस, मेक दिस कैलकुलेशन. मैं तभी आपको आज जल्दी छोड़ रहा हूं ताकि आप ये कैलकुलेशन खुद से कर सको. आई एम गिविंग यू दिस लास्ट क्वेश्चन इसी कैलकुलेशन में, और ये कैलकुलेशन आपकी नोट्स में भी है एंड इट इज वेरी इजी टू मेक. अज्यूम कर लो CDR इज 1/4 एंड RDR इज 10%, और ये कैलकुलेशन करना. आई होप आपने मेरे साथ भी की होगी. ये क्वेश्चन है विच आई एम लीविंग यू विद, और कल हम डिस्कस करेंगे. अभी CDR था 1/4, यानी कि 25% करेंसी डिपॉजिट रेशियो था. अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो 50% हो जाए, what will be the money multiplier? Assume के RDR सेम है, RDR stays same at 10%. तो आपको कैलकुलेट करना है कि जब RDR 10% है और CDR 25% है तब क्या मनी मल्टीप्लायर है, एंड जब CDR 50% कर दिया जाता है तब क्या मनी मल्टीप्लायर है. दिस इज योर होमवर्क. कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. कल हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे और we'll go forward and understand monetary policy tomorrow. Just one last announcement, one important announcement, guys. Tomorrow class will start at 4 p.m. ठीक है? I need to finish this topic tomorrow. आज थोड़ा आधा घंटा लग गया. I was looking at the essay paper. The class will start at 4 p.m. tomorrow. ठीक है? चलिए. All right, guys. Thank you. कल मिलते हैं. ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना. कल मिलते हैं. ठीक है? चलो. ओके. थैंक यू.